Good morning, everybody. Hello, I am audible. Yes, sir. Hello. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir, you are audible. Yes, yes, great. Thanks. So I can start now because time is over, but presence is very poor. Okay. So I will discuss about the post-harvest excellences to promote startups in the viticulture. This is my topic. So grape production actually mainly in the temperate region and focused in the European countries. Actually, grape is originated from the Caucasus region, Armenia. And presently, mainly grapes are produced in the European countries like Germany, France, Italy, Spain, USA, China. These are the major producers. After that, Argentina, India, Australia, South Africa. These are the other producers. So worldwide, fresh grape production in major countries, actually in the mainland China, there is the maximum grape production available according to available data, and there is the 14.1 million ton is produced for consumption as table purpose, and zero point 0.7 million ton for the wine making, and 0.9 for table purpose resin making. While in the Italy, France, USA, Spain, you can see their maximum grape production for the wine purpose and very less for the resin. Except USA, Turkey, there is the resin production, grape for resin productions are over there. And when we just bifurcate the production, how much production in which country? So China is leading about 20% produced by the China for total fresh grape products, fresh grape production, and followed by Italy, France, USA, total production, Spain, Turkey. These are the major producer. And when we break down the total production of grapes, so how it is consumed, so 50% is consumed in the process, in the form of the wine, and 42% in the form of the table purpose, while 8% is dried and we consumed as the resins or kismes or manuka. So what is the startup actually? This is the debatable. What is the startup? Startup means a new idea. Nobody is knowing the, you conceive the idea, but you are not knowing what will the business, what will the extension of your startup. You are not knowing. So there is innovative. First is the innovative ideas. There is the inspiration. You have vision also. You have a good team, because this is the teamwork. A single person can't do anything. So what is the business model? Is that repeatable or repeatable? Same time scalable. It is scalable or not, or you can do at a small scale only. Okay, and scalable. Same time there is the marketability and the industrial applicability. It is applicable to industry or not. So these all things contribute to the startup. Startup means a new idea. You are not knowing how it will work and how it will expand in the coming days or coming years or coming decades. So this is the startup. So in the table grape production, what maybe startup ideas like AI-based harvesting. Actually, we harvest the grapes by the hand only, and we just see the what is the TSS level, and we harvest the grapes according to the demand, as well as the what is the color development in the skin. But
their tool can be developed based on the artificial intelligence. On the basis of artificial intelligence, you will know in advance your grape is ready for harvest. Sensor-based quality check prior to harvest. Yes, quality check. You can done the quality. What is the TSS level? What is the sugar, or what is the acids there? So balance of acids on and sugar are available or not? Is there a higher sugars? So not applicable. And same time there is the higher acids also. So it will not good for the eating purpose. So sensor-based quality check can be developed. Rejection of bunches based on defected berries before grading. Yes. So there's different type of berries, like the discolored berries or uneven colored, uneven size, shape, or the defected by the sunlight also. So scorching is there, or there is the any there is a defects of due to the thrips or millibug, or their presence of the any microbes. So on the basis of the sensors, you can reject the berry bunches. Or if there is a berries are defected, you can reject. So such type tools can be developed, and the start can be initiated on these aspects. Utilization of machine learning techniques for grading. Generally, there is a grading by the seeing is the color and matching, and now screening is there. So just screen the color. Okay, but you can feed the color, shape, size, defect, anything you can feed in your system. So machine your tool will learn the what should be rejected, what should be accepted. So such type method tools or mechanism can be developed. So you can just reject the your unwanted or undesired bunches based on the machine learning tools. Smart packaging for extended shelf life. Yes, we are just packaging in the food grade material or boxes or the punnet packing. But a smart packaging can be developed. Smart packaging, how can we extend the shelf life? Okay, so there is a specific compounds or the packaging material which has capacity to release a specific compound that can be extend the shelf life of the grapes. So when these grapes are in the supply chain system, there will no loss in the there is the life. So fresh, when consumer will get at the table, it will fresh. So he can consume and he will get the good price return to the suppliers also. Supply chain management. Yes, it is important. Supply chain management. We do in international market. We have the good supply chain management from harvesting to the consumer. But at our local transport, local or our local transport management, there is no management when we are supplying the grapes to the the northern part of the country or southern part of the country. We have no supply chain management. We are just packing in the simple, even crates also or boxes also and supplying. There is no temperature management and no better quality packaging material, and in which market it is going, we are not doing, because traders are playing. Identification suitable markets based on the data related to the quality, variety, real-time availability of grapes in the market. So such type of mechanism can be developed. So you can collect the data. Which quality grapes are required to particular market. Okay. So what is the quality? There is a sugar level. Which sugar levels are preferred from particular region. Okay. And sometimes which varieties are demanded. Suppose that in the umbrella market, there are elongated varieties are demanded, but it is not necessary. Same variety are demanded in Patna or Bhagalpur or in the Assam region or Tripura or Nagaland. So on the basis of variety, you can collect the data. Real-time availability of grapes in the market. Yes. Which type grapes, which quality grapes are available and supplied in particular market. Such type mechanisms can be developed on the programs can be developed, and people or harvester or the producer can decide which variety, which quality is demanded by a particular market. So he can supply what is the availability. So in advance, he can decide, he can plan the supply of the product in particular market.
So robotics automation, so this is transforming very well. In the wine grapes, there is a machine harvesting is there, but in table grapes, there is the hand picking. Because in hand picking, you can care better. But now robotics, people are working on robotics. Robots are ready. They will just judge where is the bunch and it is harvestable or not harvestable. The robot will go and just pluck and collect and place in your crates. So such type work is going on, and in New Zealand, America, and European countries they are working. So people are working on such type aspects. So startups can be started in these areas also. So, when we supply the grapes to the international markets like European countries, so we place the grape guard. What is grape guard? Grape guard is like a simple seed, and when temperature is higher, so SO2 is released. What happens when we supply the grapes? So from your farm, it will go to the pack house of the exporter. There is just screening and packing, and they place the grape guard and go for the low temperature storage. Okay, so when grapes are at low temperature, grape guard will not release sulfur dioxide. When temperature is higher, SO2 automatically will be released. Okay, so it is a normal process. So we are in the containers, there is temperature maintained up to the market. Okay, but when it is by chance there is a temperature is higher due to some problem, so grape guard will release the SO2. So whatever microbes are available, that all will be killed. But now system is changing. There is the Hazel technology. Then they have developed the technology that can enhance the shelf life of the table grapes. And in different countries, they have sold out technology. There is a sachet, small sachet. You can put a small sachet inside the box or the your packaging material, and will extend the shelf life. There is an Indian startup that is also developed a technology, sachet technology, that is also trying to popularize it. So from grape guard to sachet. So it will enhance the shelf life of the table grapes. So like this, you can develop the tool, and there is a scanner is there is the QR code is there. By QR code, you can just scan it, and you will found the detail from which farm it is harvested, which variety, when harvested, and what is the quality, and which season. So many things will be available. And when we supply the grapes to European countries, so QR code is also there. But in our market, local market, domestic market, there are such type of materials or such type technology traceability system which is not available. So such type technology traceability system can be developed for local market also, for domestic market also. Even when we supply the grapes to Dubai, but there is no QR code is there. So you can just develop tool, you can just scan the grapes, you can know about which is the damaged grapes, which are the grapes suitable for the supply. So you can just scan, you can develop such type tools. When we talk about the grape processing, so there is the many grapes processed in the form of the wines, after that dried grapes, and very small quantity is converted into the juices and some other products, high quality products. So I told in table grapes production, India is the China second after China, while total grape production, India is the seventh rank. When wine production, Italy is the leader, followed by the France, Spain, USA, Australia, and very small quantities produced by the India. So this is the wine distribution. Wine belt is the mainly US or European countries. And India is the low altitude latitude wines there. So Brazil, there is the South Africa, India, and small countries, Burma and other Myanmar, other countries also producing small quantity wines. And the high altitude wines are produced by the European countries like the Germany and other parts of even Canada also. They are producing high altitude wines.
So during 2023, the France maximum production by the France, followed by Italy, Spain, Germany, Portugal, USA. So these are the leader in production of the wines. Wine consumption, maximum wine consumed in the France, USA, France, Italy, Germany, UK, Russia. And when we per capita consumption, this is very high in the France. This is about 55 liter per year per capita consumption. And this is the maximum in India. This is about 10 ml per year per capita consumption. Why Indians are taking the maximum alcohol in the form of liquor, but no wines. Preference is not for wines. Sorry. So global market, the table wines are mainly demanded, followed by the sparkling wines and very little quantity of the dessert wines. And you can see the data, the projected data. So there is a huge demand will come in coming years. Actually, wine grapes are different than table grapes. Wine grapes are bunches are small and berries are also small, always seeded. When we insert a sharp pen, you can take the 100% juice outside. So juicy, there is no pulpy. While table grapes are the pulpy grapes and big size bunches, big size berries, and different type wines. There is the red wines, white wines, rose wines, fortified wines. There is the sparkling wines, carbonated wines, and there is dry wines, sweet wines, very sweet wines, dessert wines. So different type classification is developed based on the their making style and the their production system. In India, wine is mainly produced in the Deccan Plateau. The Nasik is known as the wine production, wine capital of India. And some wineries are available in the Pune, Sangli, Bijapur also. And there is the Nandi Hills near Bangalore, even the Ramnagar and the Mysore areas. There are also wineries are there. Few wineries are there, but mainly wineries are established at the Nasik as according to the suitability of climatic conditions. India is producing wine. There are 93 wineries were registered, but now few wineries are working very well, and many wineries have been closed. And we are producing and exporting also, but same time we are importing the wines from different countries. So consumption of different type wines, red wines only 49% consumed red wines, carbonated wines very less, 3%, and white wines 13%, and fortified wines. Actually, there is these are not two wines, and in the name of the port wines, they are being supplied, and very cheap wines are there. There is no quality, but segment is very big segment there. So this is the scenario of Indian wine industry. Nasik, Solapur, Pune, Sangli, Bijapur, Bagalkot, Bangalore. There is wineries there, and there is a GI also, geographical indicator, and this is allotted to the Nasik Valley wines. And red wines varieties are mainly Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Malbec, Zinfandel. While white wines, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Chardonnay, Riesling. Riesling is very typical variety. It is produced mainly in the European countries, and in Germany, the 70 to 80% wines produced by the Riesling only, and in the Canada also. But in surprisingly in India, it is growing very well, and we are able to produce a quality wines. And in India, size of the market is about 182.6 million US dollar, and growth is expected 50%. So it is very typical case. Same time, many wineries have been closed, but few foreign wineries have been established in India and earning very well. It means we couldn't produce the quality wines, and we couldn't understand the market and the strategies to market the wines. So due to lacking of these conditions and some taxation problems, many wineries were closed. So what is the, so when we go for sweat analysis, what is the
strengthen our outsized young customer base. Our market is very, very big market, but they are not aware about the wines and the health benefits of the wines. Huge raw material base. Health benefits are intact with the wines, but our consumers are not educated about the health benefits, so they are taking the liquor. Opportunities, rising middle class, surge in the disposable income, low per capita consumption. So this opportunity we can increase the per capita consumption. India's export potential. Yes. And when you visit the different countries, European countries, they are not aware India is really producing the wines. They are not aware. So we have the export potential also. Especially in case of the desert wines, we can produce quality of desert wines here. Weakness, lack of organized supply chain and infrastructure. So this is very poor infrastructure in the supply chain. You know, when you visit the wine shops, so there is at which temperature the liquors or whiskey or rum is available, and some temperature wines are also available and placed in the shops. So it is not good, because when temperature is higher, there's a degradation of the various compounds and color degradation, and light is penetrating inside the bottles, and this is deteriorating the color and quality, overall quality of the wines. So we must store the wine bottles at 10 degrees Celsius, minimum 10 degrees Celsius. But while in the market, the only beer bottles are chilled, but no wine bottles. There is no maintenance of the temperature. So this is the problem. Our problem, weakness. Lack of organized supply chains. So I discussed wages and license and regulations. So they're very typical. In Delhi, there is 3 languages are required for labeling, while in other states there are different patterns of the labeling, because the excise department consider under the alcoholic drinks, but it is not alcoholic drinks according to the Maharashtra wine policy and followed by the Karnataka wine policy. So advertisement restrictions are also there. You can't advertise the produced. They have the product. They have the alcohol. And threats, religious influences. You know very well our society and competition. So these are the threats for wine industry. So wine made in vineyard. Actually, the quality of the vineyard wines decided by the grapes. Which quality grapes you are producing? So if you are producing quality grapes, you will certainly get the quality wines. So 80 to 90% quality decided by the grapes. And at 10 to 15%, you can manage in the winery by the yeast, okay, temperature, and in which type tanks you are fermenting the grapes. There is the steel tanks or the oak barrels. In oak barrels, this is the French oak or this is American oak. So quality is there. After that, there is the packaging material. Which type packaging material? So 10 to 50% you can control in the winery and supply chain system. While 80 to 85% quality of the wines managed in the vineyards only. So this is the winemaking process. We harvest the grapes at a desired TSS. What is the desired TSS? TSS decided by the winemakers. Winemakers decide the TSS. At this TSS he wants to harvest the grapes, because whatever TSS, it will reflect it in the percent of the alcohol. Okay. So we harvest the grapes and we just crushing, distemming and crushing. After there is the fermentation. Crushed material fermented in case of the red wines. Fermentation, and we separate when desired alcohol is there and sugar is there, we stop the fermentation and separate the wines from the pomace. And wines are again for aging, filtration, and bottling and supply the market. So aging is the very typical thing, in which type aging and up to which duration, 1 year, 2 year, 5 year. So aging. In case of the white wines, we take the white grapes and we take, after that we press and take the juice only. Juice is fermented, while in case of the red wines, we ferment the must. Not here, only juice here.
So there is the juice is fermented, and after fermentation, this is separated, and this is the is discarded, and the same thing again. And there is the aging, filtration, bottlings, and supply. So during this process, there are different type byproducts are developed during the winemaking process. So when we just destemmed the grapes, there is the stems and other materials are just collected, and we just separate the wines from the must fermented must. So there is a pomace is developed, and when we store and there is the aging there, so lees is there developed, and same time wastewater. So making of the wines, there are a lot of water utilized in the under Indian condition, temperature is higher there. So water usually I think about 5 to 8 liter water for making 1 liter of the wines is utilized. So the wastewater it can treat it again and utilized for different purposes. So wine and juice industry based waste, what is the pomace, lees, stock, and in red wines there is a stock is at 3.5 to 5.5%, and murk is 22% in red wines, while white wines are 25%. Yeast lees 0.7% and 0.5% in white wines, and juice lees about 10%. Fine wine lees is about 12% in red wines and 2.5% in white wines. And CO2 is also generated during the fermentation. Possible uses how we can utilize these materials which are developed, which are generated during wine making. So we can again ferment it and we can make the alcohol. And alcohol can be utilized. Alcohol is the ethyl alcohol, not the methyl. Ethyl alcohol. And ethyl alcohol can be utilized for different purposes, laboratories and the other purposes. Biofuel, we can utilize for biofuel. Food industry, yes. A lot of valuable material is generated, immensely valuable material is generated by wineries, but we are just not using. We are just utilized for landfill burning, or we just add in the soils, but it can be utilized in the food industry. Nature colors and dyes, we can just extract nature colors from the pomace or from the leaves. Cosmetic industry, a lot of utilization in the cosmetic industry. Nutraceutical products, even we can utilize that as a cattle feed as well. So there are grape-based different health products and beauty products are available in the market. So a lot of beauty products based on the grapes are available in the market. So innovations from waste utilization, so from landfill to lipstick, so the technologies are available, products are available. Wine leather, when we just extract the juice, the murk is developed, and we dye pomace again, and we can extract the chemicals. There is specific compounds are there we can add. After that, there is a coated and finished leather. Grape murk, skin and stock, which is recycled from the residue diet. Seed oil is polymerized by the patented method. Contained fibers and innovative manufacturing process and the addition of chemical substance create a material that is very similar to the animal leather, and it uses no oil, is 100% sustainable, and contains minimal toxic chemical reagents. So when we make 10 liters of wine, so 2.5 kg of grape murk is developed. So 1 square meter of wine leather we can develop from this. So there is the benefits of the technology. What are the benefits? Low environmental impact, renewable raw material, no polluting substances are generated, no waste of water, low production cost. Same time, this is a vegan leather. There is no utilization of the animals. Grape based from wine lead to more durable plastic. We can develop the more durable plastic, and there is the technologies are developed. Residue of Pinot Noir grapes placed in the microwave and then freeze dried, turned into powder and added to the molecular matrix of the polypropylene, a plastic frequently used for the packaging material. What happened? Untreated plastic started to crack after 25 hours.
while plastic infused with the grape material lasted twice as long. So the life of the plastic was increased. So transformation of the wine space to the polyphenol packed powder. There is the Israeli startup is there, that is the Nutrilase. That is a fine tune, a process to remove the unpleasant taste and smell compound from the wine leaves. They produced a tasteless, nutrient-packed purple powder, and it is high in the protein, dietary fibers, and polyphenols and minerals also. The powder is deep purple, which add a purple hue to products such as the cereals, proteins, bars, pasta, and the ice cream. So we have worked on different areas. So wine waste utilization we have developed here. So how we can utilize the wine waste material like the fine wine leaves. So red varieties that is widely grown worldwide Cabernet Sauvignon. So we utilize the fine wine leaves of the Cabernet Sauvignon after the processing of the fine wine leaves. So ice cream, yogurt, low sugar ice cream, we developed the technologies. So there's the difference you can see. So color, natural color, and there's a higher anthocyanins are there, polyphenols are there, antioxidant activities are also in you can take. And same time, their rheological activities were also changed. What are the rheological activities? For example, when you are taking the normal ice cream at high temperature, it started melting fast. Then the ice cream produced by adding the fine wine lees. So these are the benefits: natural color, there are antioxidant activities, phenols are there, and same time there is the melting was also delayed. Grape dyeing methods, worldwide different dyeing methods are adopted according to climatic conditions, and there is technological know-how developed in decades. So in many areas the grapes are dried and just in between the rows, open conditions. After drying, there is the process of the regions again. While under Indian conditions, we have adopted the technology of the Australian. So we harvest the grapes when TSS reached about 22-degree Brix, and healthy eventually we harvest. After that, we just remove the dust from the berry. So we just wash the grapes. After that, we dip again in the sodium solution of thiol and potassium carbonate for 2 to 4 minutes. And after that, drying process inside the seeds. So drying seeds are made there. So at 1 square feet, we place about 1 to 1.5 kg of the grapes, and we every day we just change the position of the grape bunches up down. So each and every berry can take the opportunity of the high temperature. So drying is started there, and when the moisture is about 14 to 16%, regions are ready. After that, again cleaning and washing to remove the stems, unwanted foreign materials, and washing with butter to remove the any dust particle or the oil substances are there. Again, we dry it to remove the moisture. Otherwise, it will take the moisture and problem will start there. After that, grading based on the size and color and packing and storage. This is the normal process. You can see this the grape state. So the bunches are placed here, and we sometimes we apply the different concentration of thiol and potassium carbonate in during the drying process also. It fastens the drying. It is the people thinking. After that, there was a grading actually earlier about 15 to 20, 30 years back, 20 to 30 years back, there was grading by the hand only. The lady just sit and just pick one region, the rejected region. So it was time taking and the laborious job. So there was change and it was made mechanized. So the just there is a simple machine was developed. So on the basis of size, it just graded. But now laser-based graders are available in the market, and people are utilizing laser-based graders, and these graders are just reject on the basis of color, shape, size, and damage.
You know, during 2016, there was water crisis in Latu of district of Maharashtra, and water was supplied from the Miraj station that is near to Sangli. So water scarcity was there, and you know, regions are mainly made in the Sangli and Solapur region where temperature is very high, water scarcity are there. So idea was clicked how we can avoid the water in region making, because a lot of water is utilized. As I just explained, where is the water utilized? As already there is a scarcity of water in such areas. So how much water we utilize? 13 as per estimate, about 3 lakh tons resins are being produced from the country, and there 13 to 14 lakh tons grapes are utilized. So in the dipping solution, we are using about 22 lakh liter of the oil, and potassium carbonate 5,000 tons of potassium carbonate we are utilizing, and water 14 to 15 crore liter for only making the solution. If we count the cleaning of the bunches as well as the cleaning of the resin, so it will increase again. So really, a lot of water is required in these areas. We are already water scarcity. When we dip the grape bunches in the solution, what happens? Their micro cracks are developed on the skin of the berries, and water is removed from these micro cracks. So how we can develop the micro cracks without utilizing these solutions? So abrasion, if we create the abrasion on the berries, so we can just develop the berries. So these are the same like the dipped in the solution of thalurate and potassium carbonate. So there is no requirement of water, no chemical oil requirement, and disposal of solution again. This is a problematic. What happens? We just dip the material, our bunches in the solution, and we just discard it. So it affects the quality of the soil or water if going to water body. So environmental issues are there. If we create the abrasion on the grapes, and we can save the water, we can use the chemicals, avoid the chemical utilization, same time environmental friendly resins we can produce. So there is a requirement of debenture and abrasion. So we jointly worked with our sister institute at Bhopal, that the CIA Central Institute of Agriculture Engineering. And we developed the two machines. In first machine, there is the debunching of the berries. If we are not debunching of berries, what will happen? The abrasion will not created on all bunches. So there is a debunching necessary. So debunching of the berries, first machinery developed for this purpose, and second machinery for creating the light abrasion on the berry skin. So we studied the quality that was at for. Though there were no residue of the dipping oil, no dust particles, no need of the wash before packing also. So we filed one patent also, and this technology released by Indian Council of Agriculture Research 3 years back. And the same time, this technology has been sold out to a company at the Sangli. So this is available. So the resins made by this method are, you can give a different brand. Without chemical resins, without chemical, there is no utilization of chemicals. So a specific sector can be created in the market. Use of actually what happens, to give a good color and same color, the people use the sulfur. They burn the sulfur. So this is about 1.5 to 2 gram per kg of the grapes. So sulfur dioxide is generated, and there's the yellow colored resins are produced. But these are not good, and we are consuming, so it affect our health. And there is the allergy, sulfur allergy, so it is very dangerous to them, because on packaging material we are not declaring what content of sulfur dioxide is available inside the regions. So by chlorine dioxide, we can kill all microbes if available, and there was a lot of improvement in the quality appearance of the regions. Coating of the regions also. So what happens when we are coating the regions? So there is no micro development, improvement in texture,
no moisture loss, because otherwise storage and supply chain system due to high temperature, there is a lot of loss. Overall improvement in the quality, better returns from the market. So we tried different type combinations, guar, gum, glycerol, and good quality coating we produced on the reagents, we developed in the reagents. I told about resin processing. So when we are producing the reagents by spreading the grapes on the field, so there are a lot of problems are there. So there is a requirement of the processing after the resin making. So what is the processing? Actually, there is the online systems are available, cleaning, washing, grading, packing. Actually, during 2011, 10, 11, there is a group in the Sangli. They visited the Turkey and they saw their machineries are available, their industries are available. They are producing the good quality reagents when they are taking the raw material that is not acceptable. But after cleaning, washing, grading, packing, good quality reagents are available. So they submitted the proposal to MSME ministry and they got the about 7 crore for this purpose. And one plant is established at Suhasnagar near Sangli, Miraj. So there is a lot of material, dust material is removed by this system. So online ledger-based sorting and grading is available. So you can just feed what is rejected, what is accepted. So machinery do all these things. So lot of improvement in the quality of the reagents. In cases of juice, there is no big market for the juice, grape juice, because the grape juice is converted in the wines. But if you have the quality juice, nutraceutical values are very high. You can create the market and you can earn very well. So we have the variety Manjari medica. This is the antioxidant activity is higher. Resveratrol is higher than other varieties, as well as the higher anthocyanins, about 5 to 6 gram per kg of the grapes. So grape is just juice is just produced as per the demand of the market and the maturity, proper maturity. There is TSS about 20 degree breaks is required, and just stem the bunches and take the berry separately and press it, not the mixer. You don't use the mixer, just press. So there is the pneumatic press are available. When we have these presses, so such type presses can be purchased for making the quality juice. So there is no damage of the seed or skin. Otherwise, it will affect the quality of the juice. Collect the juice and store, and adding the KMS and other things, decant it and pasteurize again and fill the bottles. So, and according to demand of the consumers, you can change the acidity and other things also by adding the acids. Sorry. Manjari Madhya variety is a game-changing variety. It's suitable for wealth from waste, and we have developed 100% zero waste processing for the Manjari Madhya grapes. These varieties developed by NRCGrapes, our institute, and juice equilibrium is more than 70%. And juice is dark red color. In other varieties, any variety you will find the color in the skin only. But here, juice is also dark red. It means the anthocyanins are very, very high. So zero waste processing concept we have developed. There is you can take the juice and there is the high value juices available, not the juices are available in the market. And after juice, there is the pomace. So two parts of that. Juice, you can supply the pure juice in the market, and same time you can blend and improve the quality of other juices also. And pomace, you can separate the skin and grape. So from skin powder, you can use the bakery products and food additives. You can develop food additives. While grape seed oil, grape seed, you can develop the seed oil and seed extract also. Same time, there is a technology developed by my colleague here. So utilization of solvent extraction. So pure anthocyanins can be extracted and utilized for high value products.
So utilization of pumice powder, we developed the technology for bakery industry. So we standardized the baking conditions and the replacing of the maida. Actually, in cookies and bread making, there we utilize the maida. So we can replace the maida by adding the pumice powder. So what will happen there when we are adding the pumice powder? Nutraceutical values will increase. Fiber content, natural fiber will added. Sensory, really very good quality cookies as well as breads are available and good quality color, attractive colors. So we screen different type pumice powder from different wine grapes and juice varieties also. And this is the bread. So dark red color breads are available. There is a high anthocyanins and antioxidant activities are with them and added natural dietary fibers also. So pure anthocyanins, I told you this is the extraction of anthocyanins and developed the different products in the capsules for preventive. So same time we have developed on the grapeseed oil. So we evaluated grapeseed oil and we developed the technology. These are the some products and a few products are already accepted by the some industries also. So startup opportunity, where are the startup opportunities in grape processing? So AI-based technologies to decide grape harvesting in advance on the basis of artificial intelligence technologies. We can identify the plot which is ready on which date. So according to availability of the grapes, we can decide the functions or our flow chart in the wineries or our juice industry according to availability of the grapes. Waste to wealth, waste innovative ideas to develop nutraceutical products. This is unlimited opportunities in this area. And our few, actually we are running the ABI center here, so few of our incubators are utilizing some materials for their products. New product development and designing of for special consumers. There are special type consumers are demanding special products. So you can develop the products and design products according to their demand. Internet of Things based system for supply chain management to deliver quality products. There is no proper supply chain management system in Indian market, but you can develop it. Startup opportunities, packaging material, designing and development. Suppose that in resin making, if there is the microbes are increasing, and we are not doing just packed in the polythene, we are taking and just eating it. So it is creating problem. When we are not aware in what level of the microbes are available in the regions. But when we develop the smart packaging material, then that can just sense what is the level of the microbes are available in the regions. You will not purchase the suspect regions from the market. And same time, sulfur dioxide. If sulfur dioxide is added in the regions more than the accepted limit. Accepted limit in India is the 750 ppm, that is the by FSSAI, but it should come on the packaging material. If on packaging material there is no mention of the what level of SO2 is available. So as a consumer, I will take it, and if I have the allergy and the asthmatic problem, so it is like the poison to me. If we develop such type products, they can sense what is the SO2 is available in your product. So it will change the just scenario. Nobody will purchase such type reagents. They have the exceeding level of the SO2, or they just sense SO2 is available, not available. They will not purchase because the asthmatic for asthmatic patients, this is the like a fashion. So such innovative ideas can be utilized for the startup. Startup ideas for utilizing Manjari medica pumice. So grape cookies, blood-based cookies, grape chocolates also. Pumice seed extract as a biopesticide, activated nanoparticles. We are working on activated nanoparticles. Same time, the rejected resins. Our one incubator is working on the rejected resins. What happens? The resins are 20 or 30 rupees per kg. He collected, make some high value products.
So such type ideas can be utilized for the startup development. So these are some examples like AgriCode. This is environment vineyard management system. So harvest, field conditions, grape maturity. So how you can maximize your yield and manage the labor. So I know files on the board. The different countries have already purchased such type of AG codes technology. So there is another startup, is the Geneva-based startup is still being find grape benefits in the grape waste. There is a founded in the 2021 by LNMs, win engineers, and this is artificial intelligence to help the farmers that the art of the viticulture. So while signal, this assists the growers by and winemakers to increase harvest efficiency and drive for the sustainable production. So such different type startups are already working. There is a startup there that have identified the functional ingredients from the Sardoni mark and has been chosen as the Newton Gate Probita pioneer for its zero waste ingredients designed for gut health. So you can increase gut health by Probita pioneer. So such type of startups are already working. So growth of Indian startup ecosystem. Presently, there are 1,17,000, more than 1,17,000 startups are registered by Startup India. 20 startups are working at international bridges, working as international bridges. More than 6 lakh users on the Startup India hub presently. 670 plus districts have the startups. 112 are unicorns. Jobs, more than 1 million jobs are in startups only. They have created a lot of jobs. Startup from tier 2 to tier 3 cities, well, about 50% are in these cities only. Funding, more than 70 billion US dollar funding to these startups. Multilateral engagements, more than 5, and 11 jobs, startup international region. And 31 states have the startup policy, own startup policies. So women-led startups also increasing, and during 2023, there are 32,143 startups are women-led startup, while only 7 years back, there were only 345 startups were led by women. Employment generation, you can see there are a lot of opportunities, and startups are supporting the employment generation. So these are the major startups. Companies now, not a startup, they started as a startup. Now the company make Gramophone, Farmart, Dehat, Crofin, there's the AgroStar, Vigro, Fasa, Kisan, Big Heart. So these are known startup, and now is a big companies and earning very well. So these are can be become an inspiration to all of you when you want to start one startup. Innovative ideas for startups, create the value. So this is our one incubator. It is producing the bird juice, the rejected berries, which when we want to develop the great bunches and big sized berries, the sugar is very good and good color. So we just thinned out premature berries. So there is we just dump these berries. There is no utilization. But when our startup is utilizing, create the value or produce the virtues. So just create the value and produce new product and supply in the market according and create the demand in the market. There is a small video, just see it. I'm so glad you want to be an entrepreneur, not want to just get into UPSC, writing IAS. To be an entrepreneur, I think the first thing is to be ready to take risks, both financial and also of the core business that you want to do. Calculate your risks and take risk. Second, familiarize yourself with the kind of facilities which are being provided by the government so that you can encash on them maximum. Two,
Three, understand the competition which is around you, because that's what is going to determine how good you are, how cost effective you are, and how good is your product. So you need to understand your competition. And finally, be ready, if your business doesn't work out, to close shop and start a new venture. Closing is not a curse. Nobody is going to black mark you on it, but be ready to accept closure. I'm so glad you. So Startup India. Startup India is supporting all startups. So there is just register your startup. There are a lot of facilities are available. Private funding agencies are available. They are investing a lot of there, and same time government agencies like ABI centers. They are ready to mentor you, give the technological support, backup to you, and hand holding. We are ready. Government agencies are ready. And their banking sectors are available there. There are special branches are available. They are supporting only the startups and funding to startups only. So thanks for listening. Thank you, sir, for your. Thank you, sir. Yes, thanks. If there is any question, Tanish can ask. Without any hesitation, please ask. Participants, if there is any question, you may please ask, sir. Well, I don't think so, sir. Then there is no any question in the chat box? No, sir. Oh. I just take that. Thanks, Dr. Samishta. Okay, thank you so much, sir, for your time. And so we'll go with our next lecture then. So Dr. Gawande, sir, are you there? Yes, very much done. Yes. So our next lecture is going to be by Dr. Gawande, Breeding Approaches for Grapevine Improvement. So, sir, I suppose you can start your lecture. Okay. Is it visible now? Presentation? Yes, sir, it's visible. Are the participants I can't see any participants. If voluntarily any participant can just switch on their video, because so that we can come to know there is somebody on the other side also. Yeah. If no questions coming also, please kindly let us know whether. I think they have not taken warning too. Voluntarily, if anybody could just switch on their videos at least so that we can see. Sir, it's okay. You can start the lecture. Okay. Good morning to all. Now, I will discuss on the breeding approaches in grape. As we all know, grape, it is known to Indian long ago. Even we find the old literature like Charak Samhita, Sushrut Samhita. There is a mention of grape which is used for different preparations like somras, ark, asavas. But the commercial cultivation or the grape farming as such is not mentioned in literature. It is, though sporadic cultivation was there. But in the 14th century, the Muslim invader Muhammad bin Tughlaq entered in the India to rule, and with him he brings some grape varieties like Abi, Bhokri, Fakiri,
Sahibi. And this variety then continue to grow in Indian region like Kabul, Kandahar, Kashmir, Sindh and Punjab during the regime of Akbar and Jahangir. Whereas the Muhammad bin Tughlaq was famous for his orders. So suddenly he one day declared that his capital will be Daulatabad. So he overnight changed the capital from Delhi to Daulatabad, and the whole empire shipped to the Marathwada region in Maharashtra. With this, the varieties what he brought with him also entered into the Deccan, and from there it spread to Nizam state, and even in Maratha Empire there was a cultivation of grape during 16th 17th century. The Portuguese missionaries uh, introduced some varieties in southern India. Now, if we see the grape cultivation in Maharashtra, there is a mention of Rao Sahib Gaikwad, who has planted a first grape orchard in Maharashtra in 1923. It was like a experimentation, but when Adarsh Godrej, a businessman, has planted a grape orchard and shown that it is remunerative business, it can yield a benefit to the farmers. Then people took the inspiration, and with that, the some innovators from the Pune region like Dada Sahib Shembekar, NC Borwake, Ganu Kaka Date, and Mama Sahib Tilekar. These pioneer grape growers spread the grape cultivation in the region, and from it spread towards Solapur, Sangli, Nashik. Now the main ruling region in Maharashtra for grape cultivation are Pune, Nashik, Solapur and Sangli. And with during 1916, the commercial grape cultivation started in Maharashtra with Thompson seedlings. And in 1990, we made a we successfully exported grape. First container was exported in 1990. As I mentioned, the major grape growing states are Maharashtra, followed by Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Mizoram. If we see the Maharashtra and Karnataka, it's account around 95% of total grape production of country. And in Maharashtra, Nashik, Sangli, Pune, Solapur are the major grape growing regions. Indian grape cultivation is very peculiar, as we cultivate mainly table grapes. Around 70% of production is of table grapes, followed by 28 to 30% of now resin. It is increasing day by day. Only 2% collectively of juice and wine. If we see the production scenario right from 90 to the recent years, in 1919 it was around 30,000 hectares grape cultivation was there, with the production of 6 lakh metric ton. Now it is 5 times increase in the production, also in the area of the grape cultivation. Now it is cultivated more than 1.55 lakh hectares with the production of 33 lakh tons and more than that. As we know, grape, it is botanically it is known as Vitis vinifera. Plankton has given the first classification of Vitis. Vitis is a dicot crop. It is important to remember this because since it is dicot, grafting is possible in grape. So, whatever the grape cultivation we are seeing today,
This grape is domesticated from the Vitis sylvestris, the progenitor of today's Vitis vinifera, and it was found in the Armenian region. It is the area sandwiched between Black Sea and Caspian Sea. And from that region, it moves in the various part of the globe. This is actually Caucasian region. From that region, it moved towards Indian subcontinent and towards Europe and America. In North America, it is a origin of Vitis labrusca and muscadina and other species of falling under the genus Vitis. As I have mentioned earlier, Vitis was not a Vitis, it is U Vitis, and under that genus, there were two subgenus, Vitis and muscadina. Now, Vitis and muscadina are a separate genus. Under Vitis, it encompasses 16 different species of economical importance like Vitis vinifera, Vitis labrusca, and other species like champagny, which is Burlandry, rupestris, raparia. These are all species of economical importance, as the two mentioned earlier, like vinifera and labrusca, are the important species of table grapes, and the rest are the species from which various rootstocks are arise. Then in muscadini, three species are there, which is Pompinoi, rotundifolia, and monsonia. So, with this rotundifolia is a source of biotic resistance for downy mildew and powdery mildew. So, under Vitis vitaceae, there are 19 genera in total. Only 7 are living, 2 are now fossil genera, there are no more. If we see the characterization of Vitis and muscadina, there are some prominent difference. Vitis has a chromosome number 38, whereas muscadina has 40. There is a bark shedding in Vitis, whereas no bark shedding in muscadina. Tendrils, these are the bifid and trifid in U Vitis, whereas in muscadina, there is no bifurcation of the tendril. Berry drop is there in muscadina, and seeds are having a beak in U Vitis species, whereas seeds are without a beak and oblong in muscadina. But the main important characteristic that gives upper hand to Vitis over the muscadina is the berry drop at maturity. If there is no berry at the harvesting season on the plant, there is no use of cultivating that crop. So Vitis is widespread in over the globe for table grape, for wine and juice making. Now, as such, grape is one crop, one plant, but it is used in varied ways based on the end use of the produce of grape. It is defined as a wine grapes, table grapes, resin grapes, and juice grapes. The grape which is used for wine making is known as wine grapes, which is freshly consumed, called as table grapes, and another two types like resin. It is dried product from the table grapes, and juice. These are the crops used for the processing purposes. Now, if we see based on the tables, we classified the grapes into 4 types like table grape, resin grape, juice grapes, and wine grapes. But there are some characteristics that should be there in the variety, so that it will be suitable for the fresh consumption, like cold berries,
there should be sugar percentage more than 60%. Pulp should be crisp and thin, skin should be thin, so that the eating quality will be better. Again, the color development, if it is a table grapes are again of two types, colored and white. White is actually green type, but it is popularly called as white. So in some of the varieties, there is a color development issues. So uniform color development is a characteristic that define the significance of the variety. Then self-thinning property is must is desirable. Actually, it is manipulated, but it is if it is there, uh, then the bunch thinning and berry thinning are the very big uh, what we say the consuming laborious work in the cultivation of grapes. So if the particular variety is self thinning, then this berry thinning and bunch thinning can be avoided. The bloom, it is a white powder like putting on the fruit. It is desirable. It is especially in China and Japan. The bloom is very much in demand. So varieties with bloom on surface are very much acceptance in China. In resin, the thin skin varieties are preferred because it help in the easy drying of the resin. Dense pulp and the sugar content are the important characteristic which decide the resin recovery from the after drying. So if there is a high TSS dense pulp, then the resin recovery will be higher. Again, if we see the wine, the juice percent should be there at least more than 65 to 70%. And high TSS is required because ultimately sugar is going to convert it in the alcohol. So it decides the alcohol percentage in wine. Low pH is required because lower the pH, the clear the vinification. Clearer will be the wine. Again, in juice percent should be more than 70%. High sugar should be there if some companies or commercial firms want to dilute that juice. So it will provide them a margin for dilution. So high TSS is required. Again, there should not be a astringency in pulp and skin because it imparts some bitterness and to juice, and it is not desirable. Sometimes for storage of the juice, pasteurization is done, and during that pasteurization, poop flavor is developed. So if juice is stored afresh, then it is well and good. But if do not develop a flavor after pasteurization, then it is again very much desirable. Now, as I mentioned, I will give you the overview of different breeding methods used in grape improvement. Breeding is actually plant matting to get a desired offspring, so that from that offspring we can select the desirable one and evolve or use them as a variety. If we see the grape, it is a self-pollinated crop, but still it is heterozygous. It is a very unique feature of grape. These are the flower structure of the grape. There are three sex morphs are found in the grape. If we see the flower, we can see the bisexual flower where both sexes are present. Male and female parts are present, which is known as a hermaphrodite or perfect flower. Sometimes in male flower, here you can see the stigma style and ovaries
absent. So this is the perfect male flower, whereas in the female flower, it is actually a bisexual flower, but these stamens are uh, curved inside, so that the stamens, the pollen sac, after the dehiscence of pollen sac, the pollen fails to reach to the stigma of the ovary, and fertilization or pollination cannot be happen. So this is treated as female flower. There are various breeding approaches in the grape improvement, like introduction, selection, hybridization, back crossing. Hybridization and back crossing is a part of combination breeding. Again, a mutation breeding, polyploidy, transgenic breeding, somatic hybridization, embryo rescue technique, and marker assisted selection. Now, if we see the introduction means to introduce a particular genotype in the newer environment. As we have seen that various grape varieties have been introduced by the Muslim invaders, missionaries, even some introduction on the scientific uh, with some scientific idea, scientific base have been made by our Indian researchers like SBS Lal Singh from the Punjab Agriculture College, Lalpur. He introduced 116 varieties, and Dr. G.S. Randwa, he has made huge introduction of more than 1,000 grape varieties during 1950s. During the first scientific introduction, the Thompson seedless entered in the India, and it is during 1928. Besides that, some varieties, as I mentioned, that Muhammad bin Tughlaq also introduced some varieties. Some Persian traveler like Baba Shah Musafir introduced Hapshi, which is known as Kali Sahibi. Abdul Bakar Khan has introduced Anabisha in Deccan region, and Portuguese missionaries introduced Isabella variety in southern part of the country. So these are the various introduction made in India. Now, whatever the gene pool we are observing today, this is attributed to the introduction made during different times in the past. Now, from this introduction or the population we have, we made the selection. Selection is the actually decision made by the breeder or by nature regarding the survival of particular gene pool. Nature decide according to the fitness of a particular genotype. Nature not always consider the productivity of that variety or quality traits, but it emphasizes on the traits which is required for the survival of the particular genotype. Whereas in artificial selection, as breeder does, the quality traits are most preferred, and from the base population, we uh, made, make the decision that particular with particular genotype we have to move ahead. So, beside this, one important breeding method is the hybridization. Hybridization is the crossing two genetically different parents to get the offspring, and which is with the desired quality traits. So hybridization can be done between the different varieties of same species, or between the individual of the different species, or between the individual of different genus. On that basis, hybridization can be intervarietal, or it can be a distant hybridization, which can be interspecific like vinifera into labrusca, or intergeneric like vitis into muscadia. So distant hybridization is made when there is no desired uh, character present in the cultivated
gene pool, so that breeder wants to introduce or introduce that character from the wild type or from the individual from the different genus, then distant hybridization is done to introduce a particular trait. Again, back crossing is a part of combination crossing. Back crossing is the, as we have seen here, parental line. We first we cross the parental line. Suppose parental line A is crossed with B, and we get the hybrid. That is F1 hybrid. If we cross this F1 hybrid again, either with parental line B or line A, then it is known as back crossing. Main intention of the back crossing is to enhance the blood level of particular parent. If suppose here in F1 hybrid, 50% of the genetic makeup is contributed by the parental line A, and rest of the 50% from the parental line B. But if we want that there are some again character that we want to enhance in the hybrid from the parental line B, then we will cross F1 with parental line B. So main intention to enhance the blood of selected parent. Blood means the particular characters, and the if we want to transfer some traits in the particular plant, then we do the back crossing. Beside this, mutation breeding is another approach. Mutation is sudden heritable change in the phenotype of the particular individual, and mutation actually some mismatch or during the replication of DNA, some mismatch happen or some error occurs or some deletion of the DNA segments occur, then it is it gives different expression in the form of trait, particular phenotypic expression. It is called a mutation. So this mutation can be a natural or induced. Now, if we see the grape cultivation scenario of India, whatever the varieties we are cultivating or under the cultivation today, the major part is the selection or the clones made by the selected by the farmers. Two bloodlines, Thompson Seedless and Kishmish Cherry. These are the two genotypes, or I will say these are the bloodlines. From these two genotypes, various clones are selected by the farmers based on the berry characters, like Sonaka Seedless, Manik Chaman, Tase Ganesh, New Sonaka Seedless. Too many clones are there which are selected from the Thompson Seedless. Whereas from the Kashmir cherry, which is a colored grape variety, the Sharat Seedless, Nana Sahib Seedless, Nana Sahib Purple Seedless, Jumbo, Sarita, Jay Seedless, and many more clones are selected, and these clones are under cultivation. So, the Indian grape growers has tap natural mutation in very effective manner. Beside this, we can induce the mutation through various mutagens like chemical methyl metal sulfonate or the through radiation like gamma ray, X-rays. Again, this is a unique case. What as you might be knowing that National Research Center for Grapes has released 4 varieties: Manjari Kishmish, Manjari Navin, Manjari Shama, and Manjari Medical. Out of that, this Manjari Kishmish is a natural um, event of a natural mutation. It is identified and developed from the Kishmish rosavis, which is a red colored variety. And the Manjari Kishmish is selected from the Kishmish rosavis, which is a green one. And it is very much popular among the grape grower or resin making. So this is the unique case of natural mutation. The mutation happens
in varied way. This is the SAM. SAM is shoot apical meristem. The growing tip of any nascent shoot is known as SAM. In that shoot apical meristem, various layers are there, outer layer and inner layer. If mutation occurs in both layers, then the solid mutant is developed, and likewise the phenotype is also expressed. Here it is a case of Tempranillo grape variety. Here, when there is no mutation in both layers, Tempranillo was white or black. Whereas there was mutation in both layers, Tempranillo changes color to dark violet or black. In other case, only L2 layer, that is inner layer, is affected. The Tempranillo, here you can see the change in color, it is gray. Now, another approach is polyploid. Polyploidy, actually ploidy level is the number of set of chromosome present in the individual. As everybody knows, in cell there is a nucleus. Every body of plant or animal made up of cell. In that cell there is nucleus. Inside nucleus there are chromosomes which are made up of DNAs. There are set of chromosomes. As I mentioned earlier, Vitis vinifera has a 2n number, that is 38. So there are two set of chromosomes, each set having 19 individual chromosomes. So Vitis vinifera is diploid since it has two sets. So when this is a normal condition. When this normal diploid condition differs, it is known as polyploidy. Sometimes there may be more than two sets present in the cell of the organism, then it is called as polyploidy. And this polyploidy is caused due to the disjunction of the chromosome during the metaphase. What happens if non-disjunction of chromosome happen at metaphase? Sorry, it is written as metaphase. It is anaphase actually. It is a phase of cell division when the chromosomes separate out into different cells. But if non-disjunction happen, then the whole set is retained in the particular cell and it is duplicated. So the polyploidy occurs. So various innovative traits can be seen in polyploidy, like large berry size, skin color may be different. Generally, gigantism, that is immense increase in a vegetative part of the particular genotype is observed in the case of polyploidy. If we see the normal diploid and polyploid, then the berry size of the polyploid will be much more than the diploid. Someone is speaking. Hello. There is interruption. Hello. Hello. Please mute yourself. Participants are requested to mute yourself. Lecture is going on. So Sir, please continue. Okay. So with the use of this polyploidy technique, one unique variety, that is Kyohyo, in Japan is developed by breeder, and this is very much popular. It is actually a cross between Centennial and Ishiwara grape. Now it is very much popular in Japan and China. This is a unique example of the polyploidy. But there is some problems during induction of polyploidy. The recovery of polyploids are not that much higher, since diploid cell tends to suppress the polyploid cells. Again, some novel techniques nowadays are acting in the genetic improvement. Among that, genetic engineering, the manipulation of genes
for the betterment of for evolving some particular character and evolving some better genotypes. So again, that as we have seen that Viticulture is a common example where the gene from the different species are transferred into the plant. The gene transfer can be made conventionally through the hybridization program or backcrossing, but it can be made with the help of genetic engineering. And there are two basic approaches of gene transfer, like cisgenics and transgenics. Transgenics, when genes are transferred in the plant from the unrelated genera like animal or virus. And cisgenics is the when we transfer the gene from the sexually compatible species. But success in cisgenics so far are uh, uh, very small in numbers. One event where thaumatin-like protein gene VBTL1 was transferred from Chardonnay to Thompson. It is a particular case of cisgenics where 7 to 8 days delays in powdery mildew was observed in Thompson seedless, and incidence of black rot was also minimal. Again, transgenic, you all are aware, but it is also tried in since 19. It is in the part of various experiment program going on the grape improvement in red globe and superior seedless uh, fruit quality traits and herbicide resistance, powdery mildew resistance. The transgenic crops were developed by A.V. Pearl in the Israel Volcanic Center. But the social acceptance of transgenic is not there as we found in cisgens, because it is thought that some gene from if gene from animal origin is transferred into the plant, the people who are vegan or vegetarian, they will not like it. But still, transgenics are ruling the crop industries. Now, another approach is somatic hybridization. Somatic hybridization is crossing the two different plants through protoplastication, which actually it is a forcefully combining the protoplast of two species or two plants of two individuals, where the plant cell are cultured together. Protoplast are the cell without cell wall, so that get the fusion of plant becomes easier. So protoplast are placed and through sonication, the fusing is that combination is done. So here the both cytoplasm and genome, nuclear genome of both species are incorporated to give rise new hybrid cell. Sometimes cytoplasm of two species are involved, only nuclear genome of one species is involved. In that case, it is known as hybrid. But this somatic hybridization not yielded much success in breeding programs. As we know, it is forcefully done. So the successful expression of specific trait is not there. One cannot guarantee that the particular expression of the trait will be there after the somatic hybridization. Again, the plants produce are always face the problem with the fertility. So the plants are not fertile, then again we cannot use further them in any breeding program, or it limits their use in the breeding program. The stability of that somatic hybrids is main concern. Again, the somatic hybrid do not have the breeding value. Breeding value is the ability
of a particular parent to transfer the trait, the unique trait that it has to its progeny. So it is again main concern. If there is no breeding value, then the potential as a parent of somatic hybrid is forfeited. So only few examples are there like brassica and potato, which are utilized as a commercial variety developed through somatic localization. Nowadays, it is era of molecular breeding where the various DNA markers are used for the selection of various plant characteristic traits, unique characters. So based on the variation present at DNA level, and the markers are actually the signpost which denotes the location of particular gene in the genome. So with that DNA markers, we can screen the large population in a very small span, short time, and at very fast speed. So this, with the help of molecular markers, the breeding process is speed up. So as such, it is not a breeding process, but it is a tool in the hand of plant breeder. So with that, you can speed up his screening process, and the progress is made uh, at least faster pace. The last one is embryo rescue technique. It is again a tool for to tackle the problem of the seediness in them. Actually, seedless grapes are preferred worldwide for eating purpose because it has a much more acceptance than the seeded ones, because seed disturb the our eating or enjoying the fruit during eating. So this seedless is caused due to two phenomena like stenospermocarpy and the parthenocarpy. In parthenocarpy, seed is not developed at all, whereas in stenospermocarpy, seeds are there, but during the growth phases, it aborts after certain days after berry set. So we find the very small trace of the seed inside the berry, and it is known as seedlessness. So if we cross the seeded and seeded parent, then the progeny will be ultimately seeded. But if we cross the seeded parent as a female and a seedless parent as a male, then there are chances that the progeny, some individual in the progeny may get a seedless one, but the percentage will be very small. To enhance that percentage, we have to cross seedless into seedless plant types so that we can get the uh, increased percentage of seedlessness in cross population, so that from that we can select the desirable type. So if we want to use seedless parent as a female, the technique which we called as embryo rescue, that should be there. Otherwise, we cannot rescue the embryo which otherwise going to abort. So that if we want to continue with that cross embryo, then embryo rescue should be there, because embryo is theta, so it needs to be rescued because it is on the verge of abortion. So before that abortion, we have to rescue that embryo, and from that embryo, we have to develop a seedling. And thus the population from the seedless into seedless cross is developed through embryo rescue technique. It is a very unique tool in the seedless grape breeding. As you might have listened in previous lecture,
the Dr. Satisha might have given the overview of rootstock development in his lecture. As we see, the grape breeding is of two types. Grape is actually propagated as a combination of two plants. Here you can see the representation of grape oil. The grape, beside, if you see the bulging area, beneath that bulging area, it is a rootstock. Now, on that rootstock, the cyan variety, which the yield from the variety or the quality food production from the variety uh, that we want to harvest, that is cyan variety. And that cyan variety is grafted on the rootstock, and this grafted plant is grown for the uh, as a in the grape orchard for the cultivation. So we want the cyan variety with unique fruit traits, and the simultaneously we want the rootstock which will support the better growth of the cyan variety grafted over. So before 90s or 80s, there were no concept of grape rootstock in India. Actually, the entry of grape rootstock or this idea of grape rootstock came worldwide. If we say on the global platform, the Europe faced the severe attack of phylloxera to their grape orchards, and all grape orchards during the 1880s were wiped out due to this phylloxera attack. And that time, the American grape were introduced as a rootstock to support this cultivation of this grape vine. And from that, the grape cultivation in Europe continues as a grafted grape vines. And in India, earlier when grape was introduced, the as I said, during 16th, grape cultivation started as a commercial grape cultivation started in 16. From 16 to 80s, it was on own-rooted grape orchard only. And after 80, when farmer came to know that on the grafted wine, we get better support, better nutrition to wine, and also it fight the drought and salinity problem. Then the grapefruit stock came into picture, and after 80s, people started growing the grape orchard as a grafted one. So nowadays the scene is Indian grape orchards. Most of the grape orchards, more than the 90% are on single grape rootstock, that is dogridge. It is the rootstock which perform better under the drought condition and salinity soil. If we see, the grape cultivation in India is concentrated in the arid region. As I mentioned earlier, more than the 85 grape production came from the Maharashtra and Karnataka. At the same time, more than the 12% of the salt affected soil of a country found in this region, in these two regions, where the grape cultivation is concentrated. So to support the grape cultivation in that grape concentrated patch, we want a rootstock which can fight the moisture stress and salinity. Again, rootstock help the uniform food bearing. It also affect the fruit ripening period, quality traits like cluster, berry size, fruitfulness, and also important one, the production level also modulated by the grape rootstock. So as we see, the 90% grape are cultivated on dogridge rootstock only,
So in a changing climate scenario, if suppose dogfish fails to perform or its resistance may break or get diluted, as we are doing it since 80, more than 40, 50 years from now. So during the long cultivation period, the resistant or tolerance may get diluted. In that case, we need the able alternative to the doggery. For that, dog rostock breeding is started at NRC grapes. Here, rootstock grape breeding is actually very long term activity. It is not that we started today and after some 2 or 3 years we will get a new rootstock. So there are some issues while tackling rootstock for grape improvement, for genetic improvement. The grape rootstocks are shy flowering habit. So first we tried to induce the flower in the grape rootstock, which are potent parent and can be used in the breeding program like 110R, 140RE, 103P and WH. So we, with the plant growth regulator intervention, we induce the flowering in Dogridge, 110R, 140RE, 1103P, Salt Creek and St. George. So using Dogridge and this three rootstock, we started the rootstock breeding program at NRC with objective to develop a grape rootstock which will be a better alternative to the doggery with enhanced tolerance to soil moisture and the salinity issues. Now, as I mentioned, that there are too many varieties developed by the farmers and those are under cultivation. But simultaneously, the research institute situated in India, those are also try to develop new varieties in grape for various purposes like juice, table, resin, wine. The initiative were taken at Indian Institute of Horticulture Research, Bengaluru, IHR, Indian Agriculture Research Institute, Agarkar Research Institute, NRC Grapes, and the Ganesh Kindergarten. Actually, this is the very pioneer work in the grape breeding was done by Dr. G.S. Jim, who in 1920s started a grape breeding in scientific way. What he did, he brought the self-pollinated progeny of the Pandari Sahib, which was introduced during the Mughal period. And that from that Pandari Sahib, he raised the cell progeny and he made the two selection, that is selection 94 and selection 7, which is later known as Chima Saibi. These are the unique example, Chima Saibi and selection 94, which is the outcome of plant breeding program. After that, various institute like IARI developed 6 varieties, IIHR developed 11 varieties for various purposes. Likewise, Agarkar Research Institute situated in Pune developed 3 varieties, and our institute also developed 4 varieties. So these are the 4 varieties developed at the NRC grapes. Manjari Naveen, this is the table grape variety. Manjari Naveen and the Shama are the table grape varieties. Naveen has a unique characteristic like Vanessa flavor. It is scented variety, strengthening character, and the earlier early variety. It is actually 10 to 15 days earlier than the Thompson seedless. Shama is the color table grape variety with gold berry size and rudimentary. Again, the Manjari Kishmish is a unique variety developed for the resin preparation, and the recovery of resin is higher than the table very popular table resin variety
Thompson seedless. Compared to that, it gives a 16.5% raising recovery, which is 25%, around 25% in Thompson seedless. As Dr. Sharma has already mentioned, the Medica, it is unique and premier variety of our institute. It is a good example of zero waste technology. It is a juice variety. Again, after the extraction of juice, the flesh and seeds are remain, which is known as pomace. Pomace is well dried and powdered to make the fortified cookies. Again, from the seed oil is prepared. From that fruit, it is high in anthocyanin content. So anthocyanin tablets are prepared. So this is the unique example of zero waste technology. This thing I already mentioned that so far more than 15 varieties were developed by the farmers. These are all the natural nutrients obtained from the either Thompson seedless or the Kishmish tree. Now the 15 out of these 15 various clones developed, 15 are the unique one and still under the cultivation. This is the Dilkash developed from the Anabe Shai in the Telangana. Again, 26 varieties developed by the institute. Now, beside these various breeding methods, there are some why grape breeding is going in slower pace. Whatever the varieties we observed today are the clones, but the varieties observed through the hybridization are very mega. So why this is so? The main thing is, first one is the long breeding cycle of the grape. It is a perennial crop, so it takes at least 3 years to fruit if we go through vegetative propagation, and even more if when we go through the seed propagation, it will take around 5 to 6 years, because drastic change in the growth type is observed when we propagate the plant from the seed. And through seed propagation is only mean to develop the progeny which we obtain through the hybridization. So again, beside the long breeding cycle, the time is added when we go through the seed propagated mix. In hybridization, we have to cross two parents, and for that, as grape is bisexual, both sexes are present. The parent we want to use as a female, we have to remove the male part from that flower, and the female flower part from the father parent. We have to put over the stigma of the mother parent, and for that, we 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 must remove the male part from the mother parent, and it is called as emasculation. So the grape is not a simple flower. It is a group of flowers known as inflorescence, where the very small, tiny flowers are there. The emasculation is very tedious job in the grape. Again, the trait transfer is tricky because grape is heterozygous crop. Again, it is self-pollinated, and the various qualitative traits or the quality traits, various traits like resistance or food quality traits, these are the polygenic traits. The heritability of the polygenic trait is very low, and due to the heterozygous, when we try to cross two parents, suppose we try to cross Thompson citrus, which is a popular variety, but it is affected with the susceptibility of the to the various fungal diseases like powdery mildew,
if we want to impart resistance, we suppose keeping with that view, if we plant resistance breeding to develop the boost resistance yeah, or to transfer the resistance from source to Thomson seedling. What we will do, we will process Thomson seedless with donor parent, but the resulting progeny, we may get the resistance, but we will not get the unique combination of the quality traits what we experience in the Thomson seedless. So the unique combination of the particular variety, as soon as we enter into the first filial generation, it shatters. So trait transfer is tricky in the grape. Another is the seed dormancy. Okay, we did the cross parent A and parent B. We developed the progeny. The progeny we want to grow that progeny in the field, because since we have developed the progeny from the heterozygous plants, in the first filial generation we will get the uh, variation, and for that we have to grow the seeds and develop the progeny and do the screening and selection for the quality traits of resistance. So we have to go through the seed propagation. Again, there is a problem that in many varieties, which are the potential parent or good parents and proven parents like a red globe, there is a seed dormancy. Seed will not germinate. If there is no germination or very less germination, then the population development is a very cumbersome task. So it is a big hurdle, seed dormancy. Again, very slow growth of the seed propagated plant, already mentioned it. The high impact of environment or the trait expression. Since the quality traits are polygenic in nature, the trait environmental impact is there. But here the molecular breeding or marker resisted selection can help us for the selection. So that can be addressed very well with the marker assisted selection. Within the narrow genetic base of the Indian grape collection, you might not be knowing that our institute is known as a National Active Germplasm Site, where we are maintaining the in our field gene bank the more than 470 collection of the grape. In history, we have seen that during the 1920s and 1950s, the various introduction has been made in the India by Indian researchers. But still, in the National Active Germplasm Site, we have only 480 germplasm. So, whatever the gene pool we have, that is not sufficient, because unless we have the sufficient variation in base population or the gene pool, you cannot have the liberty to plan the breeding program with the uh, population, as when we have you have the base population with vivid type of variation in it. So narrow genetic base of Indian grape collection is a major concern. Is restrict the breeding objective of the uh, during while planning the grape implement. Beside this, there are some thrust areas. If we see the Indian market, very few varieties are there. Some clones of Thompson seedless, clones of Kishmir Cherry, again the Red Globe, the Fantasy seedless, James seedless, uh, again Crimson seedless. Very few varieties are there, and these varieties on the we are with these varieties. It is will be dream to fight in the global market. And actually, we are dreaming with these varieties that we will stand still in the global market, but it will not going to come true, because the variation is required when you want to be a major player in the global market. So we want new varieties with limit traits
various quality attributes like body size, cycling properties, different taste, different texture, different berry skin colors. So new varieties is major concern. Again, diverse maturity period is another aspect that we need. In our gene pool, we whatever the varieties we have, all those varieties come into harvest during the period of March to April. So during the March to April, we have glut in the market. All the grape from across the country is put in the market, and farmers do not get good price for its produce. If we have broader harvest window, suppose we harvest the grape from right from January to the to end of May or even in the June, then we will get address the domestic matters market as well as the global. So in North India, harvesting is done in the June or late in the May, where harvest coincide with the rain. Uh, so to avoid that, we need the early varieties in northern India. Again, some grape color grape variety that we are growing, like crimson seedlings, it is good variety, but uniform color development is a problem because temperature shoot up after the end of the January and in the first fortnight of the February. So this actually this phase coincide with the horizon and the color development phase of the that particular variety. So under the rising temperature, it impose the some restriction over the development of good color, uniform color in the variety. So the variety which can give a uniform color are being made of time. Again, less apical dominance. If variety is vigorous, the you will see the very much vigorous growth. So it will hamper the fruitfulness. Again, it will you have to maintain that growth so that the reproductive state can be initiated. To check the vegetative growth, you have to do pinching, and lot of pinching again add to the production cost. So variety with less apical dominance, better fruitfulness are required. Again, the biotic stress resistance, especially for the downy mildew and the sucking pest. These are the important aspects of grape breeding because more than the 40% production cost is involved to check to control these biotic stresses. And last but not least, the doggerage alternative to viable alternative to doggerage is required because under changing climate, if doggerage fails to perform, the grape industry may collapse. So this is all from my side. Now it is open for discussion. Any doubt, any query?
Hello, Hello. hello. Am I audible? Yes, yes. Thank you so much, sir, for this elaborative and a wonderful lecture. Thank you. I'm Dr. Arusa from SCOS, sir. Yeah, I know you. I'm actually working on grapes. Yes. I'm working on grapes, sir. So I just want to know, sir, whenever we go for mutating the cuttings of grapes, so the year when we plant such cutting, we induce such cuttings for the mutation. Yes. So are we supposed to take the for MRV1 generation the brands of these plants for the next year to plant to screen for some character? So if we, first after the mutation treatment, mutagenic treatment, you have to grow Okay, that sir. plant, and Okay, sir. that you have to watch that plant very closely. Okay. Whatever the mutagenic population you are growing, you have to see Okay. whether there are the albinos are there. If albinos are the indication that the treatment has done its role. So albinos are there, the mutation that event is successful. It may seem, it may use as an indicator. Again, if you Okay. have not observed the albinos, you can observe the each and every plant closely, and you please allow that plant to grow till the maturity, and during that period you have to observe where variation may arise uh, till your reproductive phase, anywhere on the branch or in the fruit. And if you observe that particular mutation or desirable mutation is there, then you have to purify that mutation through the vegetative means, and okay, go for it. I just want to know if we can screen it in the second year only for some trait, maybe for some through some tilling approach. Yes, you have to screen that, but first, after going now, if you take a record or sort of things, then there are chances that that mutant part may be lost. Okay. Means, sir, for M1 generation, I have to do the plant to grow. I don't have to take any cutting from that plant and regrow it to screen for some character. I have to allow whatever will be the LD50 Yes, population. that unless you came to I know have that to the particular variation is there, only that variation you have to tap and go further for the first, second generation. sir, second generation means growing the same plant in the second year. Not growing the same plant, but suppose you have given the treatment, in very few instances you will observe the mutation is there for a particular shoot or twig. That shoot you have to separate out and grow further. Oh, sir, actually, there's a little bit of confusion because whenever we go for the mutagenesis of the seeds, there we have a population of M, and we. Your voice is not clear. Please come again. Okay, sir, so far as the mutagenesis of seeds are concerned, when we Seeds. grow such plants, MN plants, then Seeds. we allow them seeds when we go for the mutagenesis of the seeds. Yes. So we have the population M1, M2, and M3. Okay. Madam, see. But What actually I am, yes, I was answering in the context of vegetative propagation through cuttings. Actually, you are asking for the seeds. Vegetative Yeah, actually, you are asking for the seeds, no? You are asking for the sir, for the mutagenesis in vegetative seeds. only. Vegetative only. No, sir, for the vegetative only. Yes. Suppose. So there we have a M1 population, M1 population. Madam. The generation B2 is what? It is. First, clear. If you are asking in the context of vegetative propagation or the vegetative material that you have given the mutagenic treatment or the seed.
Which is your Sir, explant, seed or cuttings? Sir, cut, sir. Cutting that you have to Cutting. grow after mutagenesis, no? First, Yes, you have to yes. grow, you have to see, you have to screen. After that screening, you have to select, and then again you have to raise the progeny in next generation. And there you have to see where the mutation is solid or not. If solid, then further separate it out, again grow the progeny. This way you can purify the mutation. Sir, can I call you later on? Yes. Yeah. Hello? Okay, because Yes, the madam. voice is breaking. Yes, madam. You can. You are Sir, welcome. can I make a request? Sir, can I call you afterwards? Okay, because the voice is breaking, sir. Yes, yes. You are welcome. Okay, thank you. Thank you so much. Again, any questions from the participant side? Gawande sir, Yes. I have just a small query. You have shown some slides regarding the rootstocks breeding. Yes. So we have the different rootstocks. So particularly 140 RU, 110R and poles are having the same parents. Yes. But even though they are showing the different attributes at Yes. field level. Yes. So may I know the reason behind this? Genetic combination. Okay, okay. Based Only on due the to that. different terms. Okay, only. And their clones may show the different attributes also in future. Their clones, see, clones have the very specific difference. Hmm. If you compare a parent and clone, only single gene difference or with for a few traits, that may be different. But if you such type of clones may get from any plant if it is grown on over the long period of time over the generation. Okay, sir. Okay, okay. Thank you. I think, sir, most of the questions are asked by the participant also. And Arusha madam, she's more interested in other aspects. She will contact you personally. Okay. So thank you very much, sir. You have spent your valuable time with us and for delivering the lectures. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks to you also for giving me this opportunity. Okay, thank you. So now we will take the break and again we will meet after 11:45. Please be online.
Hello. So friends, now lecture will start. So one of the stakeholder is a member of Maharashtra Draksh Bagadar Sangh. So he's a treasurer also there, Mr. Sunil Pawar. He will deliver the lecture on how there is a scope for the domestic market for the grape industry in the India. So Pawar साहब आप ज्वाइन कर लिए? हेलो पवार जी आप ज्वाइन कर लिए हैं? पवार सर जॉईन केले का तुम्ही? तुम्ही अनम्यूट करा. तुम्ही म्यूट केलेलं असेल, आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो सर, एक कॉल करतो क्या आप एक करिए. हॅलो हॅलो हॅलो. हा पवार साहेब हा जॉईन केला आपण? हा केलं केलं. आवाज येतो आता? ओके ओके ओके. हो हो, आवाज येतोय सर आता. नो इश्यू. ओके सर. So, dear participants, now Mr. Sunil Pawarji has joined with us. So I already introduced about him. He's one of the member of MRDBS, Maharashtra Draksh Bagadar Sangh, and he's a treasurer also. And he's also looking some associations in Maharashtra which are related to the marketing and all these things. So I will request to Mr. Sunil Pawarji kindly deliver the lecture on how we can boost the domestic market of the grape in India. Pawar sir, please lecture start नमस्कार. करा. नमस्कार. व्हिडिओ नमस्कार. चालू करना जरूरी है?
या नहीं है? Sir, जरूर नहीं सर. If your range yeah. range issue is there, then no need to on the video. Yeah, okay. Thank you Sir, very much for giving सर me आपला the टाइम राहील 40 to 45 मिनिट्स. ठीक आहे सर. sure, तर sure, आपल्याला sure. जेवढं हे करायचं राहील ते, आणि त्याच्यानंतर मग क्वेश्चन आन्सर होतील. Okay, sir. Okay. Thank you. ओके सर, प्लीज. So नमस्कार सबके लिए. मेरा मैं खुद का इंट्रोडक्शन पहले करता हूँ. माय नेम इज सुनील वसंतराव पवार. आई एम फ्रॉम बारामती. I am a farmer and I am having some related some associations. Maharashtra State Grape Growers Association is our association. We are having near about more than 35,000 members, farmer producers all over Maharashtra. And also मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ बारामती KPMC कृषि उत्पन्न बाजार समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ. और जैसे कि ग्रेप इंडस्ट्री में मैंने 1986 से मैं ग्रेप इंडस्ट्री में हूँ. 1986 में फर्स्ट टाइम मैंने मार्केटिंग मतलब मेरा फर्स्ट प्रोड्यूस आया था, और उसके बाद में मैंने मार्केटिंग का जो शुरुआत किया, तो आज तक मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ. आप सबको एक्चुअल में जो आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स है वो सब काफी बड़े मतलब प्रीमियर लोग हैं सब, लेकिन मैं एक छोटा किसान हूँ, तो थोड़ा सा मेरी जो भाषा है वो आपको थोड़ा कठिन होगी ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि मैं किसानी भाषा में बात करूंगा. तो जैसा कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं 1986 में मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस आ गया, तो बिफोर दैट महाराष्ट्र में सीडेड वैरायटीज थी, और सीडलेस वैरायटी में उस टाइम पे हमने हमारे एरिया में शुरुआत किया था. बारामती एक ऐसा एरिया है जो 100 किलोमीटर फ्रॉम पूना, तो वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाइनरी जिसको बोलते हैं, वो उस टाइम पे कोऑपरेटिव में बनाया था 1971 में. और उसके बाद में फिर उस टाइम पे हम लोग जो हमारे ग्रेप्स थे उसका कुछ वाइन बनाते थे उस टाइप की सिंपल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और दूसरा हम लोग अल्कोहल बनाते, स्पिरिट बनाते थे. उसमें कुछ कठिनाइयां आने के बाद फिर हम अच्छे लोगों से जुड़ गए, और उसके बाद में हमने उसमें वाइन में एक अच्छी तरक्की की. आज बारामती एरिया में बहुत ही अच्छी वाइनरीज, करीबन 5 वाइनरीज वर्किंग में है. एक दो वाइनरीज जो है वो थोड़े उन्होंने प्रोडक्शन कम किया है, लेकिन उस टाइम पे वो माहौल था कि सीडेड वैरायटीज का तो था. तो सीडेड वैरायटी में हमने ओनली मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं रहने से हम लोग वाइन में भी हम लोग उस वक्त चले गए. तो वाइन के बाद में फिर हमने नेक्स्ट जो किया उसमें हम लोग सीडलेस ग्रेप्स में हम लोग आ गए, क्योंकि उस टाइम पे सांगली एरिया, तासगांव एरिया, नासिक में कुछ जगह पे, शोलापुर एरिया, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के जो ग्रेप जो प्रोडक्शन होते थे, तो उसमें हमने हमारे एरिया के लिए हमने सीडलेस ग्रेप्स का हमने शुरुआत किया. ये सीडलेस ग्रेप्स का हमने जो शुरुआत किया उस टाइम पे फर्स्ट ईयर का क्रॉप तो बहुत अच्छा आ गया, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट उतना ठीक नहीं था. तो हम लोगों ने ये सोचा उस टाइम पे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने एक हमारा ग्रुप था, करीबन ग्रुप में से 9 मेंबर्स ऐसे बन गए कि जिन्होंने अच्छा एक हमारे माल बनाया था. तो हमने ये तय किया कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम लोकल मार्केट में, उस वक्त तो एक्सपोर्ट का तो नाम भी नहीं था, तो लोकल मार्केट पे हम लोग डिपेंड थे. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई लोकल मार्केट में जाने के लिए हम डायरेक्टली मार्केट में न जाने से कुछ और अच्छा हम लोग मार्केटिंग कैसे करें. और पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि जो नेफेड है, तो नेफेड ने ओनियन का परचेज शुरू किया. तो इस तरीके का एक बड़ा ये न्यूज़ पेपर में आया था, और वो देखने के बाद मेरे को एक हमारे ध्यान में एक चीज आ गई कि अगर नेफेड अगर प्याज खरीदी करता है तो वो ग्रेप्स क्यों नहीं खरीदी करेगा. तो हमने उस वक्त फिर एक छोटा सा उस टाइम पे 25 पैसे का एक कार्ड आता था, तो पोस्ट कार्ड पे हमने लिख के वो भेजा दिल्ली में नेफेड के लिए कि भाई हमारा हमारा इस एरिया में एक इस तरीके का मटेरियल है,
और अच्छा माल है तो हम आपको ये माल बाय आपके मार्केटिंग करना चाहते हैं। और फिर उनकी एक टीम बॉम्बे से, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आ गए, उन्होंने हमारा ग्रेप्स देखा और वो खुश हो गए कि भैया बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी है। और वो क्वालिटी देखने के बाद उन्होंने हमसे ये किया कि भाई हम आपके साथ में ये मार्केटिंग के लिए हम आ सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम भी आगे आए और हमारा इंडिया का फर्स्ट हमारा कंसाइनमेंट हो गया उनके साथ में, फार्मर के साथ में डायरेक्टली ग्रेप्स के लिए। और हमारा ग्रेप्स उस वक्त, जैसे कि मार्केट की जो ये थी ट्रेंड, वो था सर करीबन 8 रुपया, 8.5 रुपया, 9 रुपया पर केजी का था। और उनके साथ में हमने जो काम किया, तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का था कि 10 रुपीज मिनिमम प्राइस वो हमको देंगे, और अगर उससे ज्यादा मिला, मतलब जो जिस हिसाब से नेफेड हमारा माल परचेस करके दिल्ली रहेगा या नॉर्थ में जहाँ भी जो भेजेगा, तो उसके जो भी एक्चुअल रेट आएंगे तो वो रेट हमको मिलेंगे। तो मैं आपको प्राउडली बताना चाहूंगा कि एक अच्छा मार्केटिंग का हम नेफेड के साथ में शुरुआत किया। और उस वक्त नेफेड ने हमको जो रेट, जो हमें जो रेट मिला लास्ट में पूरा मार्केटिंग होने के बाद, वो करीबन 12 से 12.5 रुपये तक पर केजी माल का रेट हमें मिल सका, क्योंकि उनके थ्रू हमने डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो क्वालिटी है वो हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से बताया उस तरीके का पैकिंग वगैरह करके, उस वक्त तो 4 केजी का ही पैकिंग था, और हमने वो मार्केटिंग किया और बहुत ही अच्छा शुरुआत उस टाइम हो गया। उसके बाद में फिर हमने कुछ बरस उनके साथ में भी काम किया, कुछ डायरेक्टली भी कुछ अच्छी पार्टियों के साथ काम किया। फिर दिल्ली करते करते फिर हम लोग कोलकाता में माल भेजा, काफी जगह पे भेजा, केरला में माल भेजा। इस तरीके से हमने डोमेस्टिक मार्केट में उस टाइम पे काम शुरू किया। उसके बाद में फिर 92 में हमने जब उस टाइम पे एक्सपोर्ट का माहौल आया था, शुरुआत हो रहा था, कई जगहों पे लोग ट्रायल कर रहे थे, तो फिर हमने भी उस वक्त हम लोग एक्सपोर्ट के लिए गए। और एक्सपोर्ट में हमने पहले 2 कंटेनर किए, और सिंगापुर के दोनों ही कंटेनर बहुत अच्छे उस टाइम पे गए। और उसके बाद में हमारा वो माहौल शुरू हो गया। फिर 94 में हमने एक हमारा कोल्ड स्टोरेज बनाया, और उस वक्त से फिर उसके बाद में महाग्रेप के साथ में हमने काम किया। महाग्रेप एक एसोसिएशन, हमारे मिस्टर सोपान कांचन उनके प्रेसिडेंट थे, और फॉर्मर एग्रीकल्चर मिस्टर मिस्टर शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने उसमें अहम हमको सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र में 20 हमने संस्थाएं बनाई, उस 20 संस्था के साथ में हमने पूरा वो डोमेस्टिक मार्केट मतलब ये एक्सपोर्ट के लिए हमने वो प्लानिंग बनाया। और करीबन 17-18 हमने उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेज शुरू में बनाए, और आहिस्ता आहिस्ता हम हमारा एक्सपोर्ट का भी काम शुरू हो गया। आज एक्सपोर्ट का काम देखते देखते आज इस बरस मतलब काफी बरस हो गए। अगर अब की सिचुएशन देखी जाए तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से इंडियन मार्केट को डिमांड बढ़ रही है। डे बाय डे जो अपना इंडेक्स है एक्सपोर्ट का, वो भी बढ़ते जा रहा है। और एक सस्टेनेबल अगर चीज बताई जाए, उस तरीके का अपना एक्सपोर्ट में ग्रेस में काम करे। लेकिन ये काम करते करते अ, अभी की जो सिचुएशन है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि अलग अलग देश है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके का काम होता है। और हम लोग जो काम अभी इंडिया से कर रहे हैं, तो इंडिया में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है करीबन 7 to 8% मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, और 90 to 92% हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करते हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे हम लोग मेहनत करने के बाद एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत कम नतीजे पे पहुंचे हैं। और ठीक है, जो सक्सेसफुल है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो हम सब लोग अगर कंसंट्रेट करना चाहेंगे, तो वो जो जरूरत है वो डोमेस्टिक मार्केट की है। और डोमेस्टिक मार्केट अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की डिमांड है, और हर जगह पे ग्रेप्स जो है वो पहुंचता है। बात यह है कि जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में हमारा माल जा रहा है, या जिस तरीके से लोगों में ग्रेप्स के लिए अवेयरनेस आना चाहिए,
तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आजकल दिख रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ग्रेप की जो जैसे मेडिकेशनल उसका जो इम्पोर्टेंस है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे फार्मर्स या हमारी जो भी ये हमारी ये सब संस्थाएं हैं, ये हम लोग वहाँ पे कम हो रहे, मतलब कम पड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज सिटी में तो ऐसा हो गया है कि वो लोग ग्रेप्स परचेस करके लेते हैं, और वो ग्रेप्स का घर में लाने के बाद वो जब देखते हैं तो वो जो अपना जो बेरी है, वो बेरी के ऊपर जो लस्टर जो रहता है, वो लस्टर को ही ये लोग दवाई समझते हैं, और ये बोलते हैं कि ये फार्मर लोग बहुत दवाई छिड़क रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो ग्रेप है ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आजकल जैसे भी ये जो मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह भी है, अगर किसी छोटे बच्चे को अगर खांसी आ गया और वो उसके पेरेंट्स उसको अगर वो हॉस्पिटल में लेके गए, तो ये पहले पूछते हैं कि आपने क्या ग्रेप्स खाया क्या? मतलब इस तरीके से ये जो लोग हैं ये ग्रेप्स के लिए इतने नेगेटिवली बात करते हैं, और उनको पता ही नहीं है। मतलब ये जो हमारी जो अभी डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखा जाए, तो लोगों को पता ही नहीं है कि इंडियन फार्मर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज रेसिड्यू टेस्टिंग करने के बाद आज अगर देखा जाए तो रिजेक्शन ना के बराबर है। हम लोग जहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये एक अच्छा काम करने का हमारा जो फार्मर का इतना जो हम लोग लगन से काम करते हैं, और जो अच्छा ग्रेप बनाते हैं, तो वो ग्रेप डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी तरह से ट्रस्टेड हम लोग पहुंचाने के लिए हम लोग कम पड़ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज अगर ये ग्रेप इंडस्ट्री के लिए है, तो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट की हमारे जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन में ग्रेप्स इज अ न्यूट्रिशनल, ये जो ये है फ्रूट है, ये इसकी इमेज बनाना, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज मेरे को दिख रहा है। आज लास्ट करीबन इतने साल के मार्केटिंग के बाद मैं तो अभी ये देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अगर ये करे, कंसंट्रेशन करे हमारी इंडियन जो ये हमारी ये है मार्केटिंग उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट आ सकता है। आज अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड वाइड जो ग्रेप प्रोडक्शन है, उसमें कुछ जो ये है नेशंस, उस नेशंस में सिर्फ 4 महीने का ही वो थ्रू आउट द ईयर 4 महीने ही वो ग्रेप्स प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमारा इंडिया अगर अपन देखा जाए, तो अर्ली से लेके लेट तक हम लोग अगर बारिश का 4 महीने का मौसम अगर छोड़ा, तो हम लोग 8 महीने तक हम लोग हमारा ग्रेप प्रोड्यूस हम लोग मार्केट में ला सकते हैं। अगर वर्ल्ड का अगर रेशियो देखा जाए, अगर ये सिर्फ भारत में मतलब इंडिया में हमारे पास ये सक्सेस हो सकता है, और दूसरा ब्राजील में ही हो सकता है, बाकी और कोई भी देश में ये इतना अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए है कि हम लोग इसका फायदा उठा के हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छी तरह से हमको प्रेजेंट होना ये बहुत जरूरी है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, तो कंटिन्यूअसली ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने आ गया है। और जिस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज का आपत्ति आ रहा है लास्ट 2-3 साल से, किसी ना किसी एरिया में ये जो अनसीजनल रेन है ये आ जाता है। लास्ट कुछ सालों में कभी ज्यादा नहीं देखते थे, लेकिन हम लोग ने अभी ओले भी गिरना, यहाँ पे हेलस्टॉर्म भी होना शुरू हो गया है। और इस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो हम सबके सामने आ गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये जो चैलेंजेस है, ये काफी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखा जाए, तो जो रेट्स जो है, ये रेट्स डोमेस्टिक मार्केट में कहीं भी कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी डाउन चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फार्मर्स का जो ये जो सीजन है, तो एक ही सीजन में या कुछ पर्टिकुलर मंथ में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन मार्केट में आ जाती है, और वो आने के बाद फिर सब जगह पे देखो से, तो मार्केट में इतना सरप्लस माल आ जाता है, तो रेट पूरे डाउन हो जाते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल पाता। तो ये जो चीज हो रही है,
इसके लिए कुछ अभी जैसे नई नई तकनीक आगे आज आ रही है, तो उसका एक सपोर्ट लेके हमको इसको एक लाइन अप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग 8 महीने में अगर माल हम लोग मार्केट में ला सकते हैं 8 मंथ्स में, तो 8 मंथ्स में अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ प्लानिंग करें तो उसमें कौन सी टाइम पे हम लोग माल मार्केट में लाएंगे तो उसको सस्टेनेबल रेट रहेगा। कुछ जगह पे जैसे क्लाइमेट चेंज का जो हमेशा प्रॉब्लम आता है, तो या अनसीजनल रेन का जो ये आता है चले, तो कई देशों में ये समस्या है। वहां पे उन्होंने प्लास्टिक कवर करके या प्रोटेक्टिव हॉर्टिकल्चर में कुछ और चीजें करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे भी महाराष्ट्र में हमारे एरिया में फलटन करके एक एरिया है। इस फलटन एरिया में बहुत अच्छी तरह से बहुत ही अर्ली हम लोग वहाँ पे के जो किसान है वो अर्ली प्रूनिंग करते हैं। जून में प्रूनिंग मतलब जून में करते हैं और वो जल्दी माल मार्केट में आता है। तो वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, डोमेस्टिक मार्केट में ही माल लाते हैं। लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन के हिसाब से प्लास्टिक कवर करने के बाद ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सक्सेस किया। करीबन लास्ट 5 to 6 ईयर उन्होंने उसमें सक्सेस ले लिया है। और 100 रुपीज to 120 रुपीज पर केजी एवरी ईयर ये माल का वो दाम ले रहे हैं। मतलब अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग अगर लाते हैं, इस तरीके का अगर सपोर्ट हमें मिलता है, तो इसमें आगे जाने के लिए बहुत अच्छा एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए ऊपर भी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। जैसे टारगेटेड अगर हम लोग देखा जाए तो मार्केट स्टडी जो है ये बहुत अच्छी तरह से मार्केट स्टडी होना जरूरी है। लास्ट एक वीक में मैं नॉर्थ में था, तो चंडीगढ़ का मार्केट में मैं था, दिल्ली के मार्केट में आजादपुर में मैं था। तो उस एरिया में मैं देख रहा था कि जिस तरीके से माल हमारा मार्केट में आ रहा है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो 10 kg में माल आ रहा है तो ऐसा दब के भरा हुआ माल, और इस तरीके का ये जो काम हो रहा है, या 20 किलो में जो माल आता है, 20 किलो का जो अपना क्रेट्स है, तो इस तरीके के माल को हम लोगों के अवॉइड करके बहुत ही अच्छी तरह से कुछ लोगों ने जो जैसे पनीर में माल भेज रहे हैं, तो ये पनीर के लिए बहुत अच्छा लोगों की डिमांड है कि अनटच मटेरियल वो लोगों को दिखता है तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो पुराने मतलब शुरुआत हमने जब किया था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 2 kg का बॉक्स हम लोग भरते थे, और 2 बॉक्सेस इकट्ठा करके 4 kg का जोटा हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग एक्सेप्ट करते थे। आज के तरह में वापस वही दौर पे जाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग 10 kg में माल भेज रहे हैं या 20 kg में माल रहे हैं, तो जो ट्रेडर जो है, वो जो आदमी जो बेचता है, तो वो हाथ उसको लगा के उसमें से आधा किलो 1 किलो का वो वजन करके वो कस्टमर को देता है। तो ये अनटच होना जरूरी है। अगर अनटच अगर पैकिंग में अच्छी तरह से अगर माल हमारा प्रेजेंट होता है, तो लोगों को वो भी एक अच्छी तरह से वो उसका मार्केटिंग हो सकता है। मैं मंडी जो है हिमाचल का, वहाँ पे उस मार्केट में मैं गया था। बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से जो माल आता है उसको वहीं के लोग अच्छी तरह से उसको पैकिंग करके रिपैकिंग करके वो माल मार्केट में दे रहे हैं। मतलब जो काम हमने करना चाहिए वो हम उनके लिए दे रहे हैं, और माल हम सस्ते में बेच रहे हैं। तो इस तरीके का, क्योंकि वहाँ पे जो ये आते हैं अपने पर्यटक जो आते हैं वहाँ पे साइट सीइंग के लिए वगैरह, वो लोग उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तो मतलब ये है कि जो लोगों को जिस तरीके से माल उनके पास पहुंचना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम लोग मार्केट ये पैकिंग उनको दे रहे हैं, वो पैकिंग के ऊपर हमारा कोडिंग होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर ट्रेसेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं वो ट्रेसेबिलिटी आना जरूरी है कि ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल ट्रेसेबिलिटी अगर उन्होंने जो स्कैनिंग किया कोड, तो उनको समझ में आए कि ये माल कहाँ से आया है, किस फर्म से आए, इसने क्या क्या उसके लिए नॉर्म्स फॉलो किए हैं। तो इस तरीके के कुछ अच्छी जो चीजें है ये लोगों के सामने लाना जरूरी है। जैसे कि प्लॉट का रजिस्ट्रेशन रहेगा, टेस्टिंग के उसके ऊपर हम लोग अगर रेसिड्यू फ्री के कुछ हम लोग उसके ऊपर कुछ ये देते हैं
उसके साथ में एगमार्क सर्टिफिकेशन वगैरह रहेगा, वो सैनिटरी फोटो ये फाइटो सैनिटरी वगैरह, ये हम लोग एक्सपोर्ट के लिए इतनी अच्छी तरह से ये सब काम करते हैं। तो थोड़ा ये जैसे ग्रेपनेट जो प्रणाली है, ये हम लोग डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी अगर अच्छी तरह से हम लोग उसको यूज करें, तो ट्रस्ट जो हमारे ग्रेप्स के लिए, ये ग्रेप्स के लिए ट्रस्ट बहुत अच्छी तरह से हमारे लोकल मार्केट में भी बन जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है, ये क्लाइमेट चेंज हमारे लिए आगे भी जाके एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो ये जो चीजें है, ये चीजों को हम लोग साथ में लेके अगर अगर जाए, आज गवर्नमेंट से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये ठीक है किसान आत्मनिर्भर वगैरह वगैरह, ये जो बातें होती है, ये तो ठीक है बातें करने में, लेकिन किसान की क्या सिचुएशन है, जो किसान है उसी को पता है। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए किसान को, या सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, हमको कुछ अच्छी तरह से ये जो मतलब आज देखो, ग्रेप एक ऐसा क्रॉप है जिसको सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य बोल वो लगता है, मतलब ये लेबर सबसे ज्यादा उसमें उपज होती है। अगर 1 एकड़ की ग्रेप्स का अगर फार्म देखा जाए, तो 2 टाइप की हम लोग कटाई करते हैं, अक्टूबर प्रूनिंग करते हैं और अप्रैल प्रूनिंग करते हैं। तो दोनों प्रूनिंग के बाद टोटल अगर हम लोग उसमें जितना भी ये मैंडेज अगर यूटिलाइज कितने होते हैं, ये अगर उसका पूरा रेशियो ले लिया कि बिफोर एंड आफ्टर और अप टू मार्केटिंग, तो करीबन 1 पर्सन पर एकड़, इस तरीके से 365 मैंडेज ये यूटिलाइजेशन 1 एकड़ में होता है। ये एज ए फार्मर हमने वो उसका डिटेल हमने ये स्टडी करके ये हमने ये किया। तो इतने अच्छे पैमाने पे ये मैंडेज वर्किंग अगर हो रहा है, तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो करीबन 4.5 लाख एकड़ का प्लांटेशन है। अगर 4.5 लाख एकड़ इंटू 365 अगर उसका कैलकुलेशन देखा तो देखो कितने बड़े लोगों को हम लोग रोजगार निर्मित करके दे रहे हैं। तो लोगों को लिए हम लोग रोजगार लेके लेके दे रहे हैं, लेकिन फार्मर्स के आज हाथ में कुछ भी नहीं रह रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीजों में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जिस गांव में या जिस एरिया में ग्रेप के प्रोडक्शन बड़े हैं, उस एरिया में अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ सालों में वो किसान का जो क्या बोलते हैं, एक सोशल या इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है। अच्छे अच्छे घर उनके बढ़ गए, जो छोटे सिंपल घर में रह रहा था उसके बंगले बन गए। उस टाइम पे अगर उसका उस टाइम का जो ग्रोथ था डोमेस्टिक मार्केट का इतना अच्छा था कि हर एक के घर में ट्रैक्टर था। हर गांव में अगर देखा जाए तो कृषि सेवा केंद्र, होटल्स, ग्रोसरी, ये कमर्शियल इकोनॉमी पूरा, मतलब ये उसका जो है वो इतना स्ट्रेंथ आगे जा रहा था। और ये एक अच्छा एक उदाहरण था कि एग्रीकल्चर में ये ग्रेप इंडस्ट्री एक बहुत बड़े में बहुत मुकाम पे जा रही है। एक्चुअल में ये सब होने में सबसे हमारा सबसे अच्छा अगर सपोर्ट हमें मिला है, तो फार्मर किसानों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छी तरह से उन्होंने अपने गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट किया है। लेकिन जब से एनआरसी ग्रेप्स महाराष्ट्र में आया, तो उसके बाद में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया। और मैं तो हमेशा आभारी रहता हूँ कि एनआरसी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उन्हें ये इंस्टीट्यूट के सभी साइंटिस्ट हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिन्होंने ही आज तक ये इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पे लेके गए। तो उन्होंने अपना काम अच्छा पूरी जिम्मेदारी निभाई है। तो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, तो इसीलिए हम लोग आज इतने प्रोडक्शन पे आ गए। लेकिन आगे की जो सिचुएशन है उसमें मार्केटिंग की सबसे बड़ी एक चैलेंज है। और ये अच्छा माल, ये इस तरीके का अच्छा प्रोडक्ट हमने जो निकाला है, वो मार्केट में लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाना, ये अभी हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। वो चैलेंज अगर हम सभी लोग इसमें अगर ध्यान दें, तो आगे जाके हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। आज देखो कि पहले बैल से काम होता था, फिर छोटे ट्रैक्टर आ गए, उसके साथ में और इंटर कल्टीवेशन के बड़े बड़े औजार आ गए। अभी ईएसएस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेस, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं आज। और इतने बड़े पैमाने पे ये सब
हम लोग हमारे लिए जितना भी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मार्केटिंग में हम लोग जो है वो जैसे कि टेक्निकली मार्केटिंग करने के लिए कुछ जो संस्थाएं उन्होंने आगे आके हमें थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है, ये मैं दावे के साथ इस तरह आपके सामने रख रहा हूँ। आज दूसरी एक जो बात है कि जो हम लोग अभी यहाँ पे जो ग्रेप्स बना रहे हैं उसमें जो वैरायटीज है, तो ये वैरायटीज लोकल वैरायटीज है, जैसे थॉमसन सीडलेस, उसके ही कुछ म्यूटेंट से हम लोग काम चला रहे हैं, उसी म्यूटेंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी में ये लंबा वाला थोड़ा सा अलग तरीके का दिखने वाला अलग, थोड़ा कलर्ड अलग, इस तरीके के जो म्यूटेंट्स हमको मिलते हैं उसी ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ अच्छी वैरायटी निकालने की एनआरसी ने भी कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस अगर है। आज अगर देखा जाए तो कई जगह पे अभी जैसे इसी में से सुधाकर करके एक वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी लोगों तक पहुंच गई है। एसएसएन ऐसी वैरायटी है, तो एसएसएन ने तो काफी अच्छा नाम अभी कुछ दिनों में कमाया है। सोनाका जैसी पुरानी वैरायटी आज भी कई जगह पे चल रही है। क्लोन तरीके की जो वैरायटी जो एनआरसी ने भी उसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया था, वो भी हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से, हमारे सोलापुर के जो फार्मर है मिस्टर काले फैमिली, उन्होंने भी शरद सीडलेस करके एक ब्लैक वैरायटी बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में लॉन्च की थी। लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन है, अभी उसके भी आगे की कुछ और वैरायटी जैसे मामा जंबो या नाना साहेब पर्पल वगैरह सॉरी, ये वैरायटीज मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। किंग बेरी जैसी एक वैरायटी उन्हीं के सोलापुर एरिया से निकली है, वो भी अच्छा काम कर रही है। क्रिम्सन जैसी जो वैरायटी है, वो वैरायटी अभी एक अच्छा आगे लोगों के सामने आ रही है, उसका भी मार्केटिंग अच्छा हो रहा है। लेकिन डोमेस्टिक में थोड़ा सा क्रिम्सन के लिए अभी और ध्यान देना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात के नासिक की सह्याद्री जो ग्रुप है बहुत बड़ा काम अच्छा कर रही है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के और से एक नया जो कंसेप्ट है, और उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी पूरे वर्ल्ड में निर्माण की है। तो उन्होंने भी अभी जैसे कुछ वैरायटीज आई है, आरा वैरायटीज उनकी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अभी आगे आ रही है, और उनका भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस तरीके से जैसे अभी ये जो प्रमोशन करना है इस माल का, तो ये प्रमोशन करने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसा कोई एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने हर एरिया में शुरू करना चाहिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने उसके लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। हमें हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम जैसे अलग अलग स्टेट्स है, उस स्टेट्स में जो कैपिटल्स है, उस कैपिटल्स में जो गवर्नमेंट के जो ये है सोर्सेस है, उनके थ्रू अगर हम लोग वहां तक पहुंच सके तो हमारा माल हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। और फेस्टिवल के हिसाब से वहां पे हम लोग छोटे छोटे फेस्टिवल लेके उसमें हम लोग शामिल होके लोगों तक हमारा फ्रूट कितना अच्छा है, किस तरीके से उसकी मेडिकेशनल ये है वैल्यू है, किस तरीके से हम उसमें और अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अगर चीज हो जाएगी, अगर ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल या फेस्टिवल जो है उस तरीके का उसको एक ये देंगे, तो जो ग्राहक है उनका भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट फार्म टू जो मतलब एड यूजर है, ये दोनों की अगर लिंकअप ये फेस्टिवल के थ्रू हो जाएगी, तो लोगों में हम अपना जो ग्रेप्स का जो एक अलग तरीके का जो हमारा अवेयरनेस है, ये हम लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं। उसकी जो अच्छी जो चीजें है वो उन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी ये बात है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारा माल जा रहा है उसकी कहीं भी नोटिंग नहीं होती, तो गवर्नमेंट के तौर पे उसकी नोटिंग होनी चाहिए कि कितना माल कौन सी मार्केट में मंडी में आ रहा है, कितने माल को किस तरीके का रेट मिल रहा है, कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। कई जगह पे ऐसे हो जाता है कि माल बहुत अच्छा होता है लेकिन वहाँ पे उस तरीके का सप्लाई मतलब उसका रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो भी एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी एक बात सबसे चैलेंजिंग जो हमारे फार्मर्स के लिए हो जाती है, तो ये है कि जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स और इस तरीके की जो हम लोग परचेस करते हैं फार्मर्स, तो वो जब परचेस करते हैं उसमें बहुत ही मिक्सिंग आता है, बहुत ही
बैड क्वालिटी हमारी आ जाती है उसमें, वो जो है उसके ऊपर बहुत कंट्रोल होना जरूरी है। आज कई जगह पे ये चैलेंजेस आ रही है, कई जगह पे जो मिक्सिंग होता है बेसल जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से फार्मर का काफी नुकसान होता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना गवर्नमेंट ने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो फार्मर के ऊपर आता है। उसका जो नुकसान है वो डायरेक्टली उसके ऊपर। अभी इसी बरस एक कंपनी हमारे थी और उसने हमारे बोरी एरिया में कुछ जो ये दिया था, फर्टिलाइजर दिया था, मेरे ख्याल से एसएसपी था वो, सिंगल न सॉरी, ये था 0050 था, और पोटैश था, और एसओपी में वो उसमें कुछ अपने ये आ गए, कुछ रेसिड्यूज आ गए, और उसकी वजह से पूरे करीबन 150 एकड़ का जो फार्म है वो उस एरिया में अफेक्टेड हो गया। तो इस तरीके के जो चैलेंज है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। और ये सब जो अभी काम हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा जैसे कि अभी हम लोग देखो जो डोमेस्टिक मार्केट में अभी जो काम करे सेम उसी तरीके का काम, मतलब दुबई में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो दुबई में भी जिस तरीके का काम हो रहा है, या सऊदी अरेबिया में जब शुरुआत हो जाती है हमारी एक्सपोर्ट की, तो दुबई और सऊदी अरेबिया वो हमारे लिए बहुत अहम रहता है, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सेम उसी टाइम पे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। तो इस तरीके से हम लोग अगर वो काम करें, अगर वहाँ पे इतना ध्यान दे रहे, उतना कष्ट कर रहे, तो थोड़ा कष्ट हम लोग डोमेस्टिक के लिए भी करें अर्ली में, तो उसका अर्ली में बहुत अच्छा फायदा हमारे एरिया में भी हो सकता है। आज इंडियन मार्केट की अगर बात कही कही जाए, हम लोग हमारे फार्मर हम लोग एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन अपने जो ये है जो सिटीज है हमारी, सिटीज में भी तो कुछ कुछ अच्छे ग्राहक भी है कि जो लोगों को अच्छी क्वालिटी वो पसंद करते हैं। और आज भी अगर हमारे पास इतना सरप्लस प्रोडक्शन है, इसीलिए हम लोग ग्रेप्स के लिए वरीड है, उसी टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसी है कि वहां से अच्छा ग्रेप्स हमारे इंडिया में भी आ रहा है। तो ये इंडिया में आने वाला जो ये इंपोर्ट जो है, उसके लिए हमारे जो भी ट्रेडर भाई है वो उसके लिए तो रेड कारपेट ही डालते हैं। हम देखते हैं कि उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं लोगों तक, अच्छी तरह से उनको ये करते पॉजिटिवली बात कर किया जाता है कि नहीं ये यहाँ से आ गया, वो वहां से आ गया, और ये बहुत ही अच्छा है वगैरह वगैरह। आज इतना अच्छा माल हमारे यहाँ पे है, और बाहर से भी माल अगर यहाँ पे आता है तो उसके लिए जितना अच्छी बात हो जाती है, तो हमारे फार्मर्स के लिए, फार्मर्स का भी डोमेस्टिक माल है, उसके लिए भी उतनी अच्छी बात होना ये जरूरी है। आज हम लोग चर्चा करते हैं तो कैलिफोर्निया का नाम हम लोग ले लेते हैं, स्पेन का लेते हैं, इटली का लेते हैं, चीन या चिली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह पे जिस तरीके से प्रोडक्शन वो ले रहे हैं, और उसमें उनको जो लिमिटेशंस है, आज उनको लिमिटेशन यही है कि उनका जो प्रोडक्शन पीरियड है वो सिर्फ 4 मंथ्स का है। तो हमारे पास 8 मंथ्स का प्रोडक्शन पीरियड है, तो हम उनसे अच्छा काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक के लिए भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग अगर ज्यादा ध्यान दें, हमने लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा, हमने लास्ट दो वर्ष से महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप ग्रोवर्स हमारा जो है, हमारे जो फार्मर्स है, हमने और हमारे कुछ जो कंसर्न हमारे जो लोग हैं, उन्होंने एक हमने तय किया था कि डोमेस्टिक मार्केट को सुधारने के लिए हम लोग क्या करें। तो महाशिवरात्रि अभी लास्ट वीक में हो गया, तो महाशिवरात्रि जो है भगवान शंकर जी की हम लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तो वो जो दिन है वो हमने उस दिन ये हमने ग्रेप डे करके हमने उसको प्रमोट किया है लास्ट 2 ईयर, 2-3 साल से, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हम उस दिन जहाँ पे भी हमारे जो भगवान के मंदिर है वहां जाके हम लोग वो प्रसाद के तौर पे ग्रेप्स हम सबको दे रहे, प्रसाद चढ़ा रहे, और छोटे इसका बहुत एक अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो श्रद्धा के हिसाब से अगर जो द्राक्ष उसको जो बोलते हैं, और अगर भगवान शंकर का अगर देखेंगे तो रुद्राक्ष जो है, तो रुद्राक्ष और द्राक्ष ये कहीं ना कहीं तो इसका थोड़ा सा एक हमने वो ये बनाया है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो ये इससे मिलजुल के है। और तो ग्रेप डे जो है
वो हमारा महाशिवरात्रि के दिन ही हमने शुरू किया है। और उस दिन देखा जाए तो जो हमारे अर्ली जो फार्मर्स हमारा माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से हम ऑल ओवर इंडिया उसको पब्लिश कर रहे हैं कि ये टुडे इज आवर ग्रेप डे। तो ग्रेप डे में आप ये इसको एक्सेप्ट किए, हमारा जो अनशन है या उपवास होते हैं उसपे ये ग्रेप आप ये करो। कई मंदिरों में हम लोग ग्रेप का जो प्रसाद है वो हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, और एक अच्छी तरह से एक नया हमने शुरुआत किया। तो ये हो सकता है, बहुत कुछ चीजें इसमें हो सकती है, अलग अलग चैलेंजेस भी है, लेकिन ये कर सकते हैं। आज मैंने जो बात किया कि इंडिया में अभी अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज है वो कंट्रियों ने अपनी पेटेंटेड वैरायटी बनाया है। उसमें जैसे ग्राफा है, SNFL है, या IFJ है, सनवर्ल्ड है। ये जो वर्ल्ड की जो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स है, और उन्होंने जो भी वर्ल्ड वाइड के जो हमारे ग्राहक है, कंज्यूमर है, तो उनकी क्या जरूरत है, उनकी कौन सी टेस्ट उनको चाहिए, उनको किस तरीके से वो माल को एक्सेप्ट करे, उसको देके अच्छी अच्छी वैरायटीज, ये जो इंटरनेशनल जो सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट्स है ये अभी बना रही है। और ये जो पेटेंटेड वैरायटीज है, ये पेटेंटेड वैरायटीज ने ये मार्केट जो है, ये मार्केट को, वर्ल्ड की मार्केट को ये काबिज करने का ये एक नया प्लान वो सक्सेस उन्होंने किया है। तो उसी तरीके से हम लोग सिर्फ थॉमसन और उसके म्यूटेंट पे जो हम लोग ये डिपेंड है, तो हमारे उसमें भी थोड़ा अगर हम लोग ध्यान दें और कुछ अच्छी वैरायटीज हम लोग अगर इंपोर्ट कर सके, तो ये हमारे इंडिया के हमारे फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाएगा। और ये सपोर्ट जो अगर हमको मिलता है तो इसका इम्पैक्ट ये फार्मर्स के लिए बहुत आएगा। आज हमारे फार्मर्स बहुत मतलब वरीड है कि हम लोग आगे कैसे जाए, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से जैसे कोविड आ गया, कोविड के बाद में तो बहुत ही मतलब ये आ गया, उसमें नुकसान लोगों का काफी हो गया। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने भी उस टाइम पे जैसे एक कंपनी है, ये स्टार एग्री बाजार। तो स्टार एग्री बाजार के साथ में उस वक्त मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो स्टार एग्री बाजार ने उस टाइम पे मतलब वो टाइम ऐसा था, कोविड था, लोग रोड पे नहीं थे, हमारा माल तो बन गया था, गाड़ियां रोड से नहीं जा रही थी। तो हमने परमिशन वगैरह लेके कोल्ड चेन से हमारे कंटेनर से हमने माल लुधियाना में भेजा, चंडीगढ़ में भेजा, और दिल्ली में भी भेजा। और हमारे कंटेनर उस टाइम पे भी अच्छी तरह से वहां पे पहुंचे। वो जो कंपनी थी वो मार्केटिंग में बहुत बड़ा काम करने वाली कंपनी कंपनी है, एग्रो बाजार, स्टार एग्रो बाजार। अगर आप सर्च करोगे तो सबको पता चलेगा। तो वो कंपनी ने उसी टाइम पे हमको काफी सपोर्ट किया था, और एक अच्छा नया ट्रेंड हमने शुरू किया था। वहां से हम लोग कुछ नए भी फार्मर्स को जोड़ रहे हैं, और लंबे मार्केट में हमारा माल हम लोग पहुंचाने में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। करीबन अगर देखा जाए तो 90% जो माल है ये फ्रेश ग्रेप्स के हिसाब से जाता है, और करीबन 9 से 10% माल ये किशमिश की, और किशमिश के थ्रू हमारे ऑल ओवर इंडिया में भी जा रहा है। अगर इंडियन फार्मर्स की, अगर हमारे महाराष्ट्र की अगर हम बात देखें, तो हम लोग वाइन में अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग फ्रेश ग्रेप्स में अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग रेजिन में अच्छा काम कर रहे हैं। और एक नया एक हमारा जो एक चीज है जहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो है जूस इंडस्ट्री। आज हर घर में सिटीज में सुबह का जो नाश्ता होता है, तो ब्रेकफास्ट के लिए उनको कुछ ना कुछ तो अच्छा ये फ्रूट मटेरियल चाहिए, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स रहेंगे या फिर जूसेस रहेंगे। तो ग्रेप जूस ये एक अच्छा सक्सेसफुल कंसेप्ट हो सकता है, जो प्योर ग्रेप जूस हम लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने आगे आके इंडियन जो हमारे कंज्यूमर है, उनको किस तरीके के टेस्ट जरूरी है, उनको किस तरीके के एरोमा पसंद आते हैं, उस तरीके की वैरायटी, उस तरीके के जूसेस अगर हम लोग मार्केट में लाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग अगर ध्यान दें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो
जो प्रोटोकॉल है वो हिसाब से कम इंडियन स्टैंडर्ड जो है, तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, इंडियन स्टैंडर्ड्स हम लोग बनाएंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं, इसी तरीके का माल हमको लोगों को देना है। जैसे कि टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग एक्सपोर्ट के लिए हम माल बनाते हैं, वो हरा माल रहता है, उसमें शुगर परसेंटेज कम रहता है। इंडियन मार्केट में शुगर अच्छा लगता है, ज्यादा उनको लगता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये अगर हम स्टैंडर्ड्स में अगर हम लोग उसमें ऊपर जो अगर ध्यान दे, या जो हायर जो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर दे, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर हम लोग इसको कर सकते हैं, उसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो हम लोग उसके ऊपर ये करेंगे, नितिन फर ध्यान साहब, देंगे। आप आपको म्यूट करिए। नितिन फर साहब, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके का हम लोग अगर ये कुछ जो चीजें हैं, तो ये चीजों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, तो मेरे हिसाब से हम लोग जो जितना हम लोग मेहनत एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस के लिए कर रहे हैं, तो उससे कम अगर हम मेहनत हम अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लिया जाए। आज सह्याद्री ने जो उनकी नई जो वैरायटी है, आरा वैरायटी, तो आरा वैरायटी का उन्होंने लॉन्चिंग किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जब उस प्रोग्राम में मैं वहां पे था उस दिन, और वहां पे मैंने देखा इतनी अच्छी तरीके से उसका लॉन्चिंग किया कि ये जो लॉन्चिंग है इस तरीके का, तो फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग उन्होंने हमारे यहाँ पे किया, और उसको बहुत ही एक आई थिंक 200 रुपये से भी ज्यादा रेट उनको डोमेस्टिक मार्केट में मिल गया। मेरे ख्याल से कैलाश मालोदे करके हमारे एक फार्मर है, और उनका लॉन्चिंग आरा वैरायटी का उस दिन किया था। तो पर बॉक्स उनको डोमेस्टिक मार्केट में 1250 रुपये का रेट उनको मिला, मतलब 260 रुपीज उसको उस वैरायटी को यहीं पे मिला। क्योंकि वो जो वैरायटी है, वो वैरायटी का टेस्ट उसकी बहुत अच्छी थी, और क्रंचीनेस उसको अच्छा था, और वो सब जो उसकी चीजें है उन्होंने ऑनलाइन उसका मार्केटिंग किया। तो इस तरीके की ऑनलाइन मार्केटिंग, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिडिंग, इस तरीके की ये जो नई जो चीजें हैं, ये चीजें 100% हमारे डोमेस्टिक मार्केट को एक ऊपर के पैमाने, मतलब एक सक्सेसफुल हमारा ये ग्रेप इंडस्ट्री का जो आगे का जो प्रवास है, ये हो सकता है। लुधियाना की मार्केट है, मुंबई की मार्केट है, काठमांडू की तो अलग है, लेकिन सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, ये मार्केट में हमेशा हमारा माल जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग माल बेच रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पे अच्छी तरीके से कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, वहां पे तो किसानों ने अपना माल जहाँ जहाँ पे मार्केट डाउन हो जाता है, डोमेस्टिक मार्केट, तो वहां पे वो माल वो स्टोर करते हैं, और 1-1.5 महीने में, 2 महीने में वो माल जब मार्केट में लाते हैं, तो मोर देन डबल उसका रेट भी उनको बढ़ रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छा काम ये हो रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से भी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन जो है, वो कोल्ड चेन के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। कोल्ड चेन की फैसिलिटी जितनी ज्यादा बढ़े, वो हमारे लिए अच्छा है। अभी मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, वो बारामती एपीएमसी, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समिति, तो वहाँ पे हमने एक नया भी ये बनाया है, जिसमें करीबन 1000 टन्स कैपेसिटी हमने वहाँ पे बनाई है। बहुत ही अच्छी तरीके का करीबन 3 हमने प्री कूलिंग चेम्बर्स बनाए हैं, और 7 ये कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं, और एक फैसिलिटी हमने वहाँ पे बनाई है। वो जो बनाई है वो है ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की कोल्ड चेन। तो वो भी हम लोग आगे जाके जूसेस के लिए या और बाकी की जो चीजें उसके लिए बना रहे। तो ये जो फैसिलिटी इस तरीके की, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए काम करने के लिए भी एक हम लोग अच्छा अगर आगे स्टेप लेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर आ सकता है। आज ग्रेप के मार्केट इतने डाउन हो रहे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस अभी पूरा खत्म हो रहा है कि अभी ये हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो हम ग्रेप्स में क्या कर सके। लेकिन जिस तरीके का अभी जो चीजों पे हमने अभी ध्यान दिया या बात किया है, तो इसमें मैंने सबसे अहम बात देखी है। आज भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज डोमेस्टिक मार्केट के भी रेट बहुत अच्छे हो रहे हैं। लास्ट ईयर में हमने हमारे फार्मर को ऐलान किया था कि आप लोग डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से जो टेस्ट है, वो टेस्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और
जो कलर है उसके ऊपर ध्यान दिए। इस वर्ष का अगर डोमेस्टिक मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए तो लास्ट ईयर की इस महीने की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, आज 50 रुपीज टू 60 रुपीज ये हमारा फार्मर का दाम हमें मिल रहा है ग्रेप्स का, व्हाइट वैरायटी के लिए। और ब्लैक वैरायटी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में भी आज 90 रुपीज प्लस, 100 रुपीज प्लस ये रेट हमारे फार्मर्स को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इंडियन मार्केट की अगर टेस्ट और इंडियन मार्केट के स्टैंडर्ड हम लोग बनाए तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ये फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए आप सभी लोग, आप जो भी हमारे ग्रेप इंडस्ट्री के लिए आप लोग जो काम कर रहे हो सब लोग, तो ये सब लोग इसमें अगर ज्यादा हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो भविष्य के लिए कि एक अच्छा हमारा जो क्रॉप है, ये क्रॉप अभी जैसे कि मतलब और इसको अच्छा दिन देखने को मिलेगा, ये आशा मैं करता हूँ। डोमेस्टिक मार्केट ये हमारे लिए भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, ये मेरा दावा है। आप सभी लोगों ने मेरे को आज इस मौके पे यहाँ पे मेरे को टाइम दिया, और जो भी मेरा कुछ सफर है मैंने ग्रेप इंडस्ट्री में किया, और अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपका सपोर्ट ऐसे ही आगे मिले ये आशा करके मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे को इसमें शामिल करने के लिए हमारी एनआरसी की पूरी टीम सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ और मेरा समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवार साहब, बहुत अच्छे वे में आपने आपके व्यूज रखे हैं ताकि ग्रेप इंडस्ट्री में डोमेस्टिक मार्केट अच्छा फ्लोरिश हो सके। आपका कीमती समय हमें आपने दिया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है सर, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट द इंडिया। 15 या 16 स्टेट से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने आपकी बात अच्छे से सुनी है और मुझे लगता है कि उनको काफी इसका फायदा होगा ताकि डोमेस्टिक मार्केट ग्रेप का और अच्छा हो सके। पार्टिसिपेंट्स इनको अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो पवार साहब से आप सीधा पूछ सकते हैं। प्लीज, एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। यस, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते गुड सर। आफ्टरनून। नमस्ते। यस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका लेक्चर बहुत उम्दा था। तो सर मैं कश्मीर से हूँ। हेलो। ओके। हाँ जी। हाँ, तो सर जनरली मुझे पूछनी है कि ये बात की जो अभी मार्केट है हमारा, उसमें ज्यादा अभी क्या सीडेड वैरायटीज का ट्रेंड है या सीडलेस का ट्रेंड है? और सर अगर मैं आपको यहाँ की बात बताऊं, यहाँ पे हमारी दो वैरायटीज है, जिसका एक है साहिबी करके और एक है हुसैनी करके, जिनका जो बेरी वेट है 8 से 10 ग्राम जाता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी ग्रोथ रेगुलेटर। तो ऐसी वैरायटीज का क्या स्कोप है अगर हम उसको टारगेट करेंगे अपने नेशनल मार्केट्स के लिए? जी, जून महीने में मैं श्रीनगर के मार्केट में था। तो जून महीने में मैंने श्रीनगर का मार्केट देखा। तो एक ऐसा है कि वहाँ की जो लोकल वैरायटीज है, तो उसका एक अलग पहचान वहाँ के लोकल लोगों के लिए है, और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उसकी टेस्ट अलग है, बहुत ही अच्छी है, ना भी चाहिए। और आपने जो बताया, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका एक अलग स्तर है, उसके पहचान वाले कुछ अलग लोग हैं कि जिनको ये जो वैरायटीज है आज भी, अनाबीशाही करके वैरायटी जो है, जो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी वैरायटी, हम लोग सबसे शुरुआत किया था वो इन्हीं वैरायटियों से किया। तो कई फार्मर्स के पास वो वैरायटी है, लेकिन मतलब कमर्शियली अगर देखा जाए तो कमर्शियली इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना ये हमारी जो सीडेड वैरायटीज का है, क्योंकि सीडेड वैरायटी इजीली लोग एक्सेप्ट करते हैं। सीडेड वैरायटी में थोड़ा सा वो सीड होने के कारण पॉपुलरिटी में अगर कुछ चंद वैरायटी है जो अच्छी चलती है, उसको हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती है, ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत उसको नहीं होती है। सीडेड में थोड़ी सी उसमें रहती है उसकी, तो वो एक अलग पहचान है उसकी। आपने जो बताई वो अच्छी सही बात है, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है उन वैरायटीज की। लेकिन नया जो ट्रेंड आ गया है वो कलर्ड वैरायटीज, उसमें अलग अलग कलर, जैसे ब्लैक कलर है, जैसे थोड़े सा अलग अलग रेड कलर्स है, ब्लैक में भी कुछ और लंबे माल वगैरह इस तरीके। तो काफी चेंजेस उसमें भी आ रहे हैं। क्रिम्सन से जो वैरायटी है, ये अभी जैसे डोमेस्टिक मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी फैल रही है। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ब्लैक ब्लैक कलर्ड में थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स फार्मर्स का है।
यस। तो सर हमें ज्यादा जाना चाहिए सीडलेसनेस की तरफ। तो अगर सर सीडलेस मैं के आपको बताऊं कि हाँ ये वैरायटी जो है ना सर, 1 kg यहाँ पे 300 350 में बिक जाती है, इवन लोकल मार्केट में। लोकल जो ओके ओके मार्केट है हमारा, तो इट जी जी फिट्स विद 300 to 350 रुपीज अ केजी। वेरी नाइस, फिर वो तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। बट सर अगर ये कि प्रोडक्शन ही उतनी नहीं है कि बाहर चली जाए, लोकली अच्छा ही सारा खत्म हो जाता है सर। ओके ओके ओके, नहीं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फार्मर्स को पर एकड़ कितना पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर जी में लास्ट में जाके फिर वही पे आ जाती है कि पर एकड़ इनकम जो है वो कितना गेन होता है। तो जी वो जी अगर सर। देखा जाए, वो अगर कैलकुलेशन वहां से ठीक बैठे, तो वो अच्छा, अगर वैरायटीज इतनी अच्छी प्रीमियम दाम पे अगर जा रही है तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए, और 100% सपोर्ट करना चाहिए। जी यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है? और साहब, मुझे लगता है सभी को आपका जो लेक्चर है, आपकी जो यस, इंफॉर्मेशन है, सभी को अच्छी लगी और सभी संतुष्ट है शायद। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा। तो सर, आप यहाँ पे जुड़े हमसे और आपने आपका यस, कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उम्मीद थैंक करते यू हैं वेरी सर आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मिलके काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ओके सर, ओके, थैंक यू। So, friends, now next lecture is regarding government initiatives for promotion of grape as an industry in India, particularly in the Maharashtra. So, this lecture will be delivered by respected Dr. K.P. Mote Saheb. He is a Director of Horticulture, State Agriculture Department of Maharashtra. So, sir, welcome to you, sir, in this online training. सो आपको सबको पता है कि मार्च का मंथ चल रहा है। एंड ऑफ मार्च सभी अधिकारी काफी बिजी रहते हैं। फिर भी सर ने हमें उनका कीमती समय दिया है और नाउ ही विल डिलीवर द लेक्चर ऑन द डिफरेंट पॉलिसीज एंड ऑल दिस थिंग व्हिच आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। सो सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप आपका लेक्चर स्टार्ट करें, प्लीज सर। थैंक यू निकुंज साहब। अ, आपने काफी अच्छा मौका मुझे डिस्टिंग्विश पार्टिसिपेंट करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद मानता हूँ। आज का जो ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है, मुझे अभी जिस सब्जेक्ट पे ये ट्रेनिंग हो रहा है वो सस्टेनेबल विटिकल्चर सॉल्यूशन टू स्ट्रेंथन द लोकल एंड ग्लोबल ट्रेड, ये सब्जेक्ट पे ये सारा लेक्चर निकुम्बे साहब और उनकी सारी टीम एनआरसी ग्रेप कर रहे हैं। यहाँ इस टीम के इस ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए आज यहाँ पे उपस्थित निकुम्बे साहब, एनआरसी ग्रेप के सारे साइंटिस्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉलेजेस। ये जो सब्जेक्ट दिया है, इनिशिएटिव टेकन फॉर द ग्रेप एज एन इंडस्ट्री, इसमें महाराष्ट्र ने क्या किया है इसके बारे में मुझे आज यहाँ पे बताना है। इसमें मैंने अभी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, अब प्रेजेंटेशन में शुरू करता हूँ। आखिरी में अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस आंसर होंगे तो उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है ग्रेप एक्सपोर्ट के लिए, उसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी पहली जो स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कि ग्रेप का सिनेरियो हम लोगों ने दिखाया है। वर्ल्ड में जो डिमांड है टोटल 51 लाख मेट्रिक टन का डिमांड है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 2.63 लाख मेट्रिक टन। अभी इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से मोर देन 90% एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से होता है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि 2.62 लैक्स ओनली अपना एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, तो अपने को बहुत स्कोप है अभी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। इंडिया में जो मेजर जो भी 2.63 लाख मेट्रिक टन हो रहा है, उसमें से यूरोप का जो एक्सपोर्ट का क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 1.06 लाख मेट्रिक टन है, बहुत ही कम यूरोप में अपना जा रहा है। लेकिन में हम लोगों ने हमारा जो कंजम्पशन है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 0.20 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है। ओवरऑल इंडिया का सीनियर अगर देखोगे 32 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है, उसमें से करीबन 29.37 लाख मेट्रिक टन का डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, लोकल मार्केट में जाता है, और
2.63 lakhs ओनली हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये वर्ल्ड ग्रेप प्रोडक्शन का सीनेरियो हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखा 7,777 लाख मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें फिर भी ओनली 4% है। उस 4% में मोर देन 95% तो महाराष्ट्र से होता है। तो आप देख रहे हैं कि चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, 148 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है। इटली है, इटली अपना काफी कंपटीशन इटली के साथ हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पे भी ग्रेप ग्रो हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, स्पेन, टर्की, और इंडिया, चिली, ईरान, साउथ अफ्रीका, ऐसे करीबन 82 कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन होता है। और जो भी प्रोडक्शन होता है वो 777 लाख मीट्रिक टन का है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी जो देख रहे हैं वर्ल्ड सिनेरियो में ओनली 4% है। नेक्स्ट। हमारा जो एक्सपोर्ट जो महाराष्ट्र और इन भारत इंडिया से हो रहा है उसका सिनेरियो मैंने दिखाया यहाँ पे 22-23 का है। और 23-24 का फिगर अब तक अपडेट नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे पूरा फिगर नहीं है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का ये सिनेरियो देखते हैं तो 2,52,000 मीट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन होता है। करीबन 2500 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसीज अपने को ये ग्रेप इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट से मिलता है। और आपका यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया का सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। कुछ टेक्निकल इशू आया है इसलिए सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ही विल अगेन ज्वाइन विद अस। सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रेनिंग। So who will attend the training up to the concluding session, they will get only the certificates. So be with us.
सर एक बार अनशेयर करिए, अगेन शेयर करिए सर। पीपीटी प्रेजेंटेशन अनशेयर कर लीजिए सर, देन अगेन शेयर करिए। हेलो। यस सर। सुनाई दे रहा है? यस यस यस, यू आर ऑडिबल सर। प्रेजेंटेशन शेयर करिए सर अभी। हाँ, करता हूँ थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। ओके ओके। तो चलो मिस कर दो। इनसे थोड़ी दूर पे डाल दो। सर मोती साहेब, हो रहा है 2 मिनट। नेटचा इश्यू येत असेल ना सर, तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा, फक्त प्रेझेंटेशन हे ठेवा। ठीक है। यस सर, योर प्रेजेंटेशन विजिबल।
करीबन 26,000 मेट्रिक टन का जो एक्सपोर्ट होता है वो महाराष्ट्र से हेलो। हाँ सर. हाँ सर थोड़ा प्रोग्रेस प्रेझेंटेशन केलं तुमचं? मतलब कोई प्रॉब्लेम आहे हा पुन्हा शेअर करा सर त्याला. प्रेजेंटेशन दिसत नाहीये, पुन्हा शेअर करा म्हटलं त्याला. शेअर द स्क्रीन. प्रेजेंटेशन केलं म्हणतो हा आवाज हो सर, ओपन झालं आता. हेलो। हो हो, हाँ ओपन झालं नीरज सर. साहब सुनाई दे रहे क्या? सुनाई दे रहा है हेलो और आपकी स्लाइड भी दिख रही है सर. वर्ल्ड ग्रेप इंपोर्ट का जो हेलो स्लाइड है 5वीं वो दिख रही ठीक है है. नेक्स्ट। यस 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 हाँ ठीक है नेक्स्ट से एक्सपोर्ट कर रहा है। रशिया से भी अपन कुछ आ रहा है। ऐसा करीबन 30% है। रशिया में अभी जाके मार्केट खुला है, वहाँ पे भी अभी 12% से थोड़ा आगे चल रहा है। और यूएई में अभी 17% हम लोग है। लेकिन बड़ा जो मार्केट है यूएसए और जर्मनी और यूके को और अपने को ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर अभी. आ रहे हैं ना देखो। तो रेजिन तो मैंने बताया नेक्स्ट। हाँ ये जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है इसमें आप देख रहे हैं कि यूरोप में नेदरलैंड है, यूके यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत और कतार, ओमान में कंट्रीज तो अभी तो पिछले 3 साल से हम लोगों ने के सिंगापुर और थाईलैंड, हांगकांग में भी पिछले 7-8 साल से हम लोगों ने ओपन करके ये मार्केट काफी कवर करने की कोशिश की। कम है तो पिछले मतलब 15-20 साल से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो अभी जो चैलेंज है ग्रेप एक्सपोर्ट में, तो आपको पता है कि उनका जो रिक्वायरमेंट है पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो एमआरएल के बिलो होना ही चाहिए, तो वो एक अपने लिए काफी चैलेंजिंग है क्योंकि अपना जो क्लाइमेट है उसमें पेस्ट एंड डिसीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब जब मैच्योरिटी स्टेज पे आता है तो थोड़ा मिलीबग का प्रॉब्लम होता है। अगर उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा स्प्रे करने हैं तो रेसिड्यू इशू अपने उसमें आ जाता है। फूड भी वही रेसिड्यू की वजह से फूड सेफ्टी का इशू है। क्वालिटी पैरामीटर्स में साइज और बाकी सब इशू में उसमें वो भी एक अपने लिए चैलेंज है। ट्रेसेबिलिटी नेट सिस्टम जो अपेडा ने शुरू किया है कि वो सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही report करना चाहिए। तो उसमें जो हो रहा है करीबन 44,000 इस साल महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन में अभी मतलब कंट्रीब्यूशन है मोर देन 90। रेगुलेशन का ही थोड़ा सा इशू है। ये सारे चैलेंजेस हमारे जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी एक्सपोर्ट होना चाहिए उसमें थोड़ा इश्यूज हमको आ रहा है। नेक्स्ट इशू बताऊंगा नेक्स्ट।
तो हम लोग जो मतलब डिफरेंट हेलो, सुनिए जरा। हेलो, हेलो, हेलो। Stable. एक कर तुम। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ निको में सब। हेलो। दूसरा तो नहीं मिला। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? हाँ हाँ। यस सर, इट इज प्लीज कंटिन्यू। काफी डिस्टर्बेंस है। बीएसएनएल काम कर रहे हैं ना, उन्होंने पूरा लाइन खोल के रखा है ना, तो हमारा जो इनिशिएटिव है ओके ओके, उसके बारे में थोड़ा मैं ठीक है बताऊंगा। सर, ठीक तो है, ओके ओके। कोऑर्डिनेशन मीटिंग तो हम हर हर महीने में लेते हैं। सारे स्टेक होल्डर को बुला के उनके सामने एक्सपोर्ट का जो भी इशू होगा वो कोऑर्डिनेशन करके कैसे चल उसमें मतलब हल निकालना है, वो सारा डिस्कशन हमारा होता है। और नेक्स्ट मीटिंग में उसका कंप्लायंस भी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा जो इनिशिएटिव है इसमें सबसे पहला है, स्टेट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफी फेवरेबल है ये ग्रेप और हॉर्टिकल्चर के लिए। तो काफी ये बढ़ रहा है। हमारा जो सॉइल है वो सैंडी लोमी सॉइल है, तो इसलिए वो भी काफी फेवरेबल है। तो इसमें ग्रेप एरिया बढ़ाने में कोई इश्यू नहीं आ रहा है हमारा। इसलिए हम लोग अभी करीबन 1,18,000 तक हेक्टर का एरिया हम महाराष्ट्र में हम लोग कवर कर लिया है। उसमें हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो ग्रेप इंडस्ट्री उसको प्रोडक्शन एनहांसमेंट प्रोसेसिंग में कैसे जाए, इस चीज़ पे हम लोग इसमें काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसमें लार्जेस्ट ग्रेप ग्रोइंग स्टेट करके इंडिया में महाराष्ट्र का ही नाम है। और ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और सारा चीज़ें देख के हम लोग एरिया एक्सपेंशन के लिए काफ़ी स्कीम्स वगैरह यहाँ पे इनिशिएट किया है। जरूर। तो हम लोग अभी जो एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए जो डिफरेंट स्कीम थे हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एरिया एक्सपेंशन है, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज है, मैकेनाइज माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स है, ट्रेसिबिलिटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन में हमारा अच्छा काम है, और गारंटी ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एरिया एक्सपेंशन के लिए हम लोगों ने एमआईडीएस का सपोर्ट लिया है, और स्टेट की एक एमडी नरेगा का स्कीम है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और एक दूसरा स्टेट की एरिया हॉर्टिकल्चर एरिया एक्सपेंशन के लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने स्टेट से इनिशिएट किया है। ऐसे 3 स्कीम से हम लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में एमआईडीएस से जो भी अभी 30% आउटले उसके लिए रिजर्व किया है, उसी में से हम लोग रैपर है,
पैक हाउसेस है, कोस्टल है, सारी चीजों में यहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन में भी हमारा काफी अच्छा काम महाराष्ट्र कर रहा है। हर साल हराने की हमारी कोशिश है। इंश्योरेंस कवरेज हम लोगों ने दिया है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमको आपको दिखाएंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, उन्होंने जो 55 कंट्रीज में क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 12 क्लस्टर्स अभी चालू किया है। 12 में से 2 क्लस्टर्स वो महाराष्ट्र को मिला है, एक ग्रेप का है, एक पोमोग्रेनेट का है। ग्रेप में हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डोमेटिंग ग्रेप एरिया है, वहीं से हम लोग ये सीडीए हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज हमारे यहाँ मतलब नासिक, सोलापुर नगर और सातारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छी फैसिलिटीज हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम से यहाँ पे बने हुए हैं। एक तो एमआईडीएस से कर रहे हैं, मैग्नेट से भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। फिर बाद में हमारा स्टेट की जो स्मार्ट स्कीम है, वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है, उसमें से भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा करके डिफरेंट स्कीम का कन्वर्जेंस करके ज्यादा फैसिलिटी कैसे आ सकते हैं, ये हम लोग सोच रहे हैं। उसमें काफी हमारा प्रयास है। जीआई में इंडिया में सबसे अच्छा पोजीशन महाराष्ट्र का है। 27 प्रोडक्ट से हमारे को जिसको जीआई मिला है, उसमें ग्रेप का 3 जीआई है। नासिक ग्रेप, नासिक वाइन और रेजिन को मिला है। ऐसे 3 क्रॉप को हमारा यहाँ पे मिला है। ऐसा करके डिफरेंट स्कीम का सपोर्ट लेके हम लोग एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और ये सारा जो एरिया एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी बताया था कि एरिया एक्सपेंशन में हम लोगों ने 2 स्कीम हमारा एक तो नरेगा से हम लोग काम कर रहे हैं। नरेगा में ग्रेप का कल्टीवेशन हम लोगों ने दिया है, ऑलरेडी इंक्लूड किया है, 2 साल हो गए। इसमें हम लोग किसानों को कुछ लेबर और मटेरियल में कुछ प्लांटिंग मटेरियल, पेस्टिसाइड, ऐसा करके करीबन 2,81,000 का सपोर्ट हम लोग ये नरेगा से कर रहे हैं। और 22-23 में हमारा करीबन 24 हेक्टर का प्लांटेशन हुआ था। और इस साल हमारा 162.20 हेक्टर्स का हमारा प्लांटेशन थ्रू एमजी नरेगा से हुआ है। ये किसी स्टेट ने अभी तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया है, लेकिन हम लोग इसमें अच्छे काम कर रहे हैं। कर्नाटक ने इसमें काम शुरू किया है, कर्नाटक का भी उसमें है, लेकिन महाराष्ट्र का जो प्रोग्रेस है, 162 हेक्टर का प्लांटेशन इस साल का है। तो ये काफी अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। नेक्स्ट, प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड नर्सरी है, प्राइवेट नर्सरी है और यूनिवर्सिटी की नर्सरी है। करीबन 1181 नर्सरी हमारे पास है। और एवरी एवरी ईयर हम लोग कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा प्लांटिंग मटेरियल बनाते हैं। और इसमें अभी ग्रेप में थोड़ा इश्यू है प्लांटिंग मटेरियल का, कि ग्रेप में अभी क्लीन प्लांट प्रोपगेशन का कैंपेन इस साल से, मतलब अगले साल से शुरू होने वाला है। और उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र ही चूज किया है। महाराष्ट्र का क्लाइमेटिक कंडीशन, वह सारा चीजें देख के महाराष्ट्र में सीपीपी का प्रोग्राम पर्टिकुलर वो अभी प्रपोज है उसमें। और हमको सजेशन मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कुछ प्ले और अच्छा प्लांटिंग मटेरियल वो हमको सप्लाई करके दे रहा है। तो इसमें प्लांटिंग मटेरियल में अभी भी इश्यू है हमारा, लेकिन अब जो भी है, तो ये सारा चीजें हम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमारा अनसीजनल रेन्स, हेल स्टॉर्म्स, ये हम बहुत सालों से उसको फेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसान पूरी अक्टूबर प्रूनिंग के बाद काफी मतलब काम जॉब है वो सब, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, आईएनएम, आईपीएम, वाटर रिक्वायरमेंट, सारी चीजें वो देखता है। लेकिन वो मैच्योरिटी स्टेज पे अगर अनसीजनल रेन होता है तो उसमें काफी डैमेज होता था। तो पिछले अनेक साल से हमारा जो एक्सपीरियंस था, फिर स्टेट ने एक डिसीजन लिया है कि आरकेवे में हम लोगों ने 12 करोड़ की स्कीम प्रपोज किया है। उसमें प्लास्टिक कवर्स हम दे रहे हैं किसानों को। इसमें हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है, करीबन 4,20,000 का एस्टिमेट हम लोगों ने 1 एकड़ के लिए किया है। तो वो हिसाब से हम लोगों ने 100 एकड़ के लिए 12 करोड़ की स्कीम प्रपोज किया है। इस साल हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कवर कैसे देते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया ऑलरेडी, प्लास्टिक कवर आप देख रहे होंगे कि नीचे क्रॉप है और ऊपर वो कवर किया है। मतलब उससे क्या होता है कि अनसीजनल रेन भी आता है तो कोई इश्यू नहीं आता है, और हेलस्टॉर्म भी होती है तो कोई डैमेज नहीं होता बेरीज को। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा भी हेलस्टॉर्म होने के बेरीज को डैमेज हुआ तो फिर होता है, फिर उसमें फंगस डेवलप होता है और वो पूरा बंच
एक्सपोर्ट के लिए उसको रिजेक्ट करना पड़ता था, काफी नुकसान किसानों को होता था। इसलिए ये इनिशिएटिव हम लोगों ने इस साल से लिया है, MIDH से और RQA दोनों स्कीम से हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। Next. और अभी मैं क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज को भी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हम हमारा जो ट्रिगर्स हम लोगों ने जो फिक्स किया है पर्टिकुलरली फॉर ग्रेप, एक अनसीजनल रेन का एक ट्रिगर है, हमारा ह्यूमिडिटी का एक इश्यू हम लोग ने लिया है, लो टेम्परेचर का भी हमें काफी सामना करना पड़ता है, और हेल स्टॉर्म्स वो हमारा एड ऑन कंपोनेंट है। लेकिन 4 कंपोनेंट में अगर किसानों को नुकसान होता है तो हम लोग, अगर वो इंश्योरेंस कवर कराता है तो उसी को करीबन 3,20,000 पर हेक्टर तक का मुआवजा हम लोग यहाँ से देते हैं। इसमें हमारी दो कंपनी काम कर रही थी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और HDFC एग्री जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये दो कंपनी है। 3,20,000 का कवरेज हम थ्रू ये फूड क्रॉप के लिए हम लोग ये इंश्योरेंस स्कीम में दे रहे हैं किसान को। नेक्स्ट, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसमें भी स्टेट का काम काफी अच्छा है। अब तक हम लोगों ने एक 32 लाख हेक्टर का एरिया माइक्रो इरिगेशन में ला चुके हैं हम लोग। अभी इस साल का पिछले 10 साल का निकालते तो 10 लाख हेक्टर का हमारा एरिया उसमें आ चुका है। और पर्टिकुलरली फॉर द ग्रेप, ग्रेप में भी हम लोगों ने करीबन मोर देन 98% एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन में ला चुके हैं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करीब ग्रिप का जो हमारा एरिया कवरेज है 1,30,000 हेक्टर तक हम लोगों ने ग्रेप में, तो 100% एरिया अभी ड्रिप इरिगेशन में आ चुका है। नेक्स्ट, हमारी जो ट्रेन थी यहाँ पे, तो आप महाराष्ट्र के बारे में इतना एक्सपोर्ट क्यों रहा है, यहाँ पे ट्रेन भी अच्छे है। तो आप यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट, एक तो RPQS का फैसिलिटी जो है मुंबई में है, तो वो जैसे भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगती है तो वो लोग आ जाते हैं। और एक्सपोर्ट का जो भी टेक्निकल इशू क्रिएट होता है तो वो सोल्यूशन के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आके उसको सोल्यूशन निकालते हैं। अपना काफी अच्छे इसमें काम कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। दूसरा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल भी हमारे यहाँ है। रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ जनरल DGFT का ही ऑफिस पुणे, नागपुर और थाने में होने की वजह से हम लोगों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड निकालने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुरंत मिल जाता है। तो जिसको एक्सपोर्ट करना है तो तुरंत सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड महाराष्ट्र के लिए है। फाइटोसैनिटरी जो हम लोग देना पड़ते हैं, जो भी कंसाइनमेंट इट इज फ्री फॉर पेशेंट, डिसीज सर्टिफाई करके देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने करीबन 16 ऑफिसर को महाराष्ट्र से हम लोगों ने नॉमिनेट किया है। टोटल 24 ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट डिपार्टमेंट के मिला के। रेलवे टेस्टिंग लैब भी हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और बाहर में करीब 13 लेबोरेटरीज वर्किंग में है, उसमें से पुणे में 5 है, मुंबई में 6 है, नासिक में 2 ऐसे लेबोरेटरी, एनिमल अप्रूव्ड लेबोरेटरी भी यहाँ पे है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है, तो ये यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं इसमें। Yes. एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन ट्रिटी, ये भी हमारे पास है। इसमें ग्रेप में नहीं लगता, लेकिन अदर क्रॉप्स, ऑरेंज है, मैंगो है, इसके लिए जो लगते हैं वो सारा फैसिलिटीज हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। MSAMD, महाराष्ट्र एग्री मार्केटिंग बोर्ड, ये फैसिलिटी सपोर्ट करता है। एक वेपर हेड ट्रीटमेंट का फैसिलिटी है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट का फैसिलिटी है। जिस कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा मुंबई में हमारा ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वहीं पे सारा कंसर्न में लाके वहीं से वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह देके जिस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना है उस कंट्री का ट्रीटमेंट का और प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करके हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स है वो एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब उसको अलाउ करते हैं। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन फैसिलिटी भी है, सी पोर्ट हमारे पास है मुंबई, मुंबई में JNPT है, और इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई है, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में भी अभी हमारी फैसिलिटीज हो चुकी है। ड्राई पोर्ट का काफी अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है, पुणे में है, नागपुर रीजन में वर्धा है, और मराठवाड़ा में जालना, और नासिक जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का रहता है तो उसमें नासिक में भी हमारा ड्राई पोर्ट है। तो उसकी वजह से ये काफी सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से हो रहा है। और जो प्लांटिंग मटेरियल जो इंपोर्ट होता है उसका जो इंस्पेक्शन और उसका
जो 6 महीने तक उसका ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, उसके लिए हम लोगों ने हमारा जो महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और 4 यूनिवर्सिटी का HOD प्लांट पैथोलॉजी को हम लोगों ने ऑथराइज करके रखा है कि जो भी कंसाइनमेंट आता है तो उसका वो पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फैसिलिटीज में पूरा वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर उसका कोई पेस्ट एंड डिसीज और कोई इश्यूज हो, वो सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही प्लांटिंग मटेरियल को नॉर्मल फील्ड में ग्रो करने के लिए हम लोग अलाउ कर रहे थे। इसमें भी काफी मतलब अभी अभी जो सुनील पवार साहब बता रहे थे प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करने का, प्राइवेट पार्टीज अभी ला रहे हैं। जैसे आरा का इंपोर्ट हुआ है, हमारी प्राइवेट सह्याद्री एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ने उन्होंने इंपोर्ट किया है। उसमें भी ये सारी चीजें PQ पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फैसिलिटीज का उनको काफी मतलब बेनिफिट हुआ है, कि जिसकी वजह से वो अभी वो किसान के फार्मर ग्रो कर सकते हैं। अभी GI का मैंने ऑलरेडी बताया था कि 27 क्रॉप का हम लोगों को मिल चुका है। और ऑथराइज यूजर्स, जो जिस यूजर्स मतलब जो ये GI टैग का फायदा लेके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या लोकल में कहीं सेल करना चाहते हैं, वैसे 10,000 लोगों को हम लोगों ने ऑथराइज करके रखा है, जो इंडिया में हमारा कंट्रीब्यूशन 82% का है। तो इसमें भी काफी अच्छा काम ये कर चुके हैं हम लोग। अभी नासिक ग्रेप का हमारा 239 का ऑथराइज यूजर्स है। लहसुन ओनियन, ओनियन का है। वाइन का भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसा करके GI में ऑथराइज यूजर्स का नंबर बढ़ा के उनको हम लोग एक्सपोर्ट के लिए किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो उसी ब्रांड्स के नाम से एक्सपोर्ट करें, ताकि उसे जाके GI टैग होने की वजह से ज्यादा रेट को मिल सकता है। नेक्स्ट। और ये दूसरा हमारा इनिशिएटिव है अभी ग्रेप डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब हम लोगों ने स्टेट में स्टीवर्डशिप काउंसिल का गठन करने के लिए ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, और उसका काम भी अभी शुरू हो चुका है। उसमें MRDBA जो है द्राक्ष बागायतदार संघ, सुनील कुमार साहब बता रहे थे, तो वही संघ को हम लोगों ने स्टीवर्डशिप काउंसिल का काम दिया है। इसमें हम लोग अभी ये जो असाइनमेंट दिया है उनको, एक डोमेस्टिक मार्केट, जो आप देख चुके हैं करीबन 30 लाख मीट्रिक टन का डोमेस्टिक मार्केट है। इसमें भी जो अंगूर जा रहा है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड के साथ जा रहा है, तो वो क्या है, इसके लिए हम लोग उसमें से ये काउंसिल में से काम करने वाले हैं। डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट मार्केट्स, अदर मार्केट से हम लोग कर रहे हैं। पेस्टिसाइड रेसिपी फॉर डोमेस्टिक मार्केट एज पर द FSSI MRL, वो भी निश्चित करने हम लोग जा रहे हैं। पैकिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स को कैसा, मार्केट अगर काबिज करना है तो डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का पैकिंग होना चाहिए, इसका भी हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हम लोग किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये तो हमारा अभी मतलब अभी किसान लेबर का काफी इशू होने की वजह से मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी स्टेट की सेपरेट स्कीम है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें से हम लोग किसान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा करके ये स्टीवर्डशिप काउंसिल में ये सारे ऑब्जेक्ट्स सामने रख के ये काउंसिल हम लोग अभी फुल वर्किंग में अभी तो नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रपोज है और वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सारा डोमेस्टिक मार्केट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो पेस्टिसाइड फ्री रहेगा, और अट्रैक्टिव पैकिंग में कैसे जाएगा, इस तरह का इनिशिएटिव हम लोग ये काउंसिल से लेना चाहते हैं। नेक्स्ट। और हमारा स्टेट ने एक और इनिशिएटिव लिया था 2021 में, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल हम लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। थ्रू दिस सेल हम किसानों को एक ट्रेसेबिलिटी नेट सिस्टम जो है उसमें हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों को गाइड कर रहे हैं, और फील्ड में विजिट करके उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ये सारा फोटोग्राफ जो है ये हम किसानों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देके ट्रेसेबिलिटी नेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसमें से हम पिछले 3 साल से हमारा करीबन मोर देन 40,000 फार्मर्स ट्रेसेबिलिटी नेट सिस्टम में रजिस्टर कर रहा है, और वही किसान अभी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये संख्या बढ़ाने के लिए हमारा अभी प्रयास जारी है। डिफरेंट स्कीम से, अलग अलग माध्यम से हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन सिस्टम होने से, और हमारे जो विलेज लेवल के जो वर्कर्स हैं उन्हीं को सारा हम लोगों ने ट्रेन करके रखा है। तो किसानों के साथ इकट्ठा होके ये ट्रेसेबिलिटी नेट सिस्टम है, किसानों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल
दोनों काम कर रहे हैं और कंट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन 80% हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रेप के लिए हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए काफी हर एक अपेडा ने क्लस्टर आइडेंटिफाई किया है, एमआईडीएस का भी क्लस्टर है, एमएसएमई का क्लस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी हम लोगों ने क्लस्टर हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करके रखा है। हर एक एजेंसी अपने अपने क्लस्टर को सपोर्ट करने के लिए उनका स्कीम का उसका सपोर्ट दे रहे हैं, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करके रखा है। तो नासिक में जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हम लोग अभी जो मैंने अभी जिक्र किया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नासिक ग्रेप में जो अप्रूव हुआ है, उसमें हम मैपिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉकेट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से कितना अंगूर प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैपिंग किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फार्मर्स फ्रॉम द क्लस्टर्स, और किसानों को ट्रेनिंग्स उसमें दे रहे हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फार्मर्स, वो सारा चीजें हम किसान को दे रहे हैं। बायर सेलर मीट का आयोजन हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें किसान और ट्रेडर्स को इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां से एक्सपोर्ट या लोकल मार्केट में जाए, इसलिए हमारा ये कोशिश जारी है। जेआई प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हम लोग इसमें से करने वाले हैं, और क्रिएशन ऑफ पैक हाउसेस फॉर एक्सपोर्ट, तो ये अच्छी एक्टिविटी हमको यहाँ पे सपोर्ट होने वाली है। जो अभी 1 ही साल हुआ है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी तक पूरा फुल फंक्शन में नहीं है, लेकिन क्रिएशन ऑफ पैक हाउसेस फॉर द एक्सपोर्ट अभी भी हमारे यहाँ, अगर एशियन कंट्रीज में अगर काउंट करते हैं तो सबसे ज्यादा फैसिलिटी महाराष्ट्र में। फिर भी अभी जो हम लोग जो करीबन 3 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके लिए फैसिलिटीज जो हम लोगों ने क्रिएट करके है वो अभी काफी इनकम्प्लीट है, और हमको और ज्यादा चाहिए। तो ये सीडीए का जो प्रोग्राम है हमारा, इनमें से हम लोग किसान को उसमें सपोर्ट करने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैक हाउसेस यहाँ से देने का कोशिश है। नेक्स्ट, जय इंडिकेशन का मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सारा 27 क्रॉप्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक दो दो क्रॉप्स है कि जो जीआई, मतलब वहाँ का जो प्रोडक्शन है उसको कुछ तो फैसिलिटीज है, उसका टेस्ट अलग है, उसका फ्लेवर अलग है, इसलिए उसका काफी डिमांड है, तो जीआई अप्रूव करके रखा है अभी। जीआई टैग और ऑथराइज यूजर की संख्या बढ़ा के हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करने का यहाँ से हमारा कोशिश है। मैं ऑलरेडी बताया कि हम लोगों ने स्पेशल इनिशिएटिव टेकन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज यूजर्स फॉर जीआई प्रोडक्ट, तो जीआई प्रोडक्ट्स जो भी अभी हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुए, उनका अगर मार्केटिंग वो जीआई टैग से करना है तो उसके लिए ऑथराइज यूजर्स बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऑथराइज यूजर्स इज ओनली ऑथराइज फॉर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट, तो उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो जाके ये जीआई प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ने वाला है, इसलिए हम इसको भी हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये ऑथराइज यूजर का स्टेटस आप देखोगे तो करीबन 10,000 सारे क्रॉप में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किसानों को ये इसमें सिस्टम में लाया है। सबसे ज्यादा हमारा पोमोग्रेनेट में है, अल्फांसो में है, सांगली रीजन में हमारे 1375 किसान है, सांगली टर्मरिक है। ऐसे डिफरेंट क्रॉप के लिए ये हमारी संख्या यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी नासिक जीआई का अगर देखोगे तो उसका जो जीआई टैग है उसकी वैलिडिटी अभी 2019-29 तक है, और अब तक का हमारा जो ऑथराइज यूजर है 239 हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट करके रखा है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट का प्रमोशन के लिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर्स हम लोगों ने 15 अगस्त 2021 को सारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने शुरू किया था, और ये सेंटर ऑलरेडी वर्किंग में है। यहाँ पे पीएससी एक सीनियर क्लास वन ऑफिसर यहाँ पे काम करता है, और किसानों को जिसको भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी एक्सपोर्ट करना है तो उसी चीज के लिए सारा गाइडेंस ये हमारी ये सेल किसानों को प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड रिकूलिंग पैक हाउसेज, ये एमआईडीएस से हम लोगों ने काफी सपोर्ट इसमें दिया है। अभी 35% सब्सिडी है, लेकिन फिर भी किसानों का डिमांड बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि एमआईडी कम से कम 30% आउटले शुड बी रिजर्व फॉर दिस कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो हम लोग वो सारा जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जरूरी है
तो इसलिए 30% उसको प्रावधान रखते हैं। जो भी किसान हमको ये PHM में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए अप्लाई करते हैं, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसा सपोर्ट कर सके देखते हैं। हम लोग जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में एप्लीकेशन देते हैं, हम महाडीबीटी या ऑनलाइन सिस्टम से हम लोग हमारा काम चल रहा है। जिस किसान को भी उसमें बेनिफिट लेना है तो उसको महाडीबीटी से एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है तो साल में 2 बार हम लोग, जिन्होंने भी एप्लीकेशन सबमिट किया है उन लोगों को पोस्ट हायर मैनेजमेंट फैसिलिटीज क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आता है, अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन कराना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना पड़ता है, और जो सैंक्शन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, कितने कमिटीज है, क्या क्या देखते हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम वो कैसे वर्क करते हैं, और सब्सिडी कैसे अकाउंट में डिलीवर होती है, वो सारी चीजें हम लोग किसान को यहीं से दे रहे हैं। इसलिए हमारा हर साल कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो इसलिए तो अभी भी जो फैसिलिटी है वो अभी फुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। मतलब हमारे जो किसान है, एक्सपोर्ट होने के बाद में बहुत सारा माल वो बैक हाउस में पैकिंग करके रख देते हैं, और अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम पे वो लोकल मार्केट के लिए वो अंगूर निकालते हैं। तो इसलिए हमारा स्टोरेज इसमें हमको बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट स्कीम से हम किसान को इसमें भी सपोर्ट करके ये फैसिलिटीज बढ़ाने का हमारा प्रयास कंटिन्यूसली जारी है। ये ग्रेप नेट में मैंने ऑलरेडी बताया कि करीबन 44,000 किसानों को हम लोगों ने इस नेट सिस्टम में लाया है, जो एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट, ये हमारे कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है, जो मतलब किसान का फार्म रजिस्ट्रेशन नंबर से लगा के अक्टूबर प्रूनिंग के बाद में पूरा डिटेल शेड्यूल हमारे पास उसका सिस्टम में हम लोगों ने डाला है कि कौन सा केमिकल किस पेस्ट के लिए, किस डिसीज के लिए उन्होंने यूज किया है और कितनी बार किया है, वो सारा डेटा वो हम लोग मतलब प्रोडक्शन से लगा के मार्केटिंग तक का पूरा डेटा ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से हम लोग किसानों को, मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री को जा रहा है, क्योंकि अगर वो यूरोप होता है तो यूरोप में पूरी चीजें, मतलब कौन किसान है, कब उसका अक्टूबर और अप्रैल छाटनी हुआ है, और मार्केटिंग हार्वेस्टिंग कब किया है, कब उन्होंने डिलीवर किया, ये सारी चीजें वो ट्रेसेबिलिटी नेट सिस्टम में हम लोग किसानों को अब मतलब कस्टमर के लिए अवेलेबल करके दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारे स्टेक होल्डर से NRCC का काफी योगदान है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। सबसे ज्यादा जो SOP बनाया है तो इसमें NRCC का काफी बड़ा योगदान है। जो केमिकल पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन है उन्हीं से हम लोग लेते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल हर एक केमिकल का कैसा ऑब्जर्व करना, वो सारी चीजें ये NRCC हमको बताती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट स्कीम से सपोर्ट करता है। ट्रेड डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग अभी प्लास्टिक कवर प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं ग्रेप ग्रोवर को। ऐसा लाइकवाइज रिसर्च टेस्टिंग लैब है, एगमार का ऑफिस हमारे यहाँ है। एक्सपोर्टर की संख्या बढ़ाने के लिए आई कोड देने के लिए पुणे में ऑफिस है। अपेड़ा बॉम्बे में होने की वजह से इसमें से भी हमको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफी सपोर्ट हो रही है। ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा काम कर रहे हैं, इसलिए जो एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र जो करीबन 95% एक्सपोर्ट इंडिया में से और करता है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। इसलिए हर साल हमारे एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये रजिस्ट्रेशन फार्म रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो ऐसे ही किसान को उसके फील्ड खेत में बुला के ट्रेनिंग दे के उनको रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे किसान को ट्रेनिंग में देते हैं। ये हमारा मेजर 5 फ्रूट्स क्रॉप्स है। ग्रेप है, मैंगो है, बनाना है, पोमेग्रेनेट है, ऑरेंजेस है और ओनियन है, कि जिसमें पूरा कंट्री में हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। ग्रेप में हम लोग नीदरलैंड, बांग्लादेश, UAE, रशिया, UK, इस कंट्री को हम लोग हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये सारा नटशेल में जो ग्रेप का इनिशिएटिव है ये हमारा स्टेट का है बस। तो ये दिस इज मैं मेरे को जो लेक्चर उन्होंने निकम्बे साहब ने दिए थे, इनिशिएटिव फॉर द ग्रेप फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन,
उसके बारे में यहाँ मेरा ये प्रेजेंटेशन था। आप लोगों ने काफ़ी गौर से सुना, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे निकुम्बे साहब का मैं पर्टिकुलरली धन्यवाद मानता हूँ कि आपने मुझे सारे डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लेवल के स्टेक होल्डर के साथ बात करने के लिए जो एक चांस दिया, उसके लिए मैं आपका और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है, उसका प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। और आप सभी को मेरा आपसे धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी क्रिस्पी। तो जो पार्टिसिपेंट है, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो सर से आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड? हाँ, yes. Good afternoon, sir. Hello. गुड आफ्टरनून। Hello. Am I audible, sir? या यू आर। Uh, Sir, as you know that grape is actually a temperate fruit crop that is acclimatized to the tropical and subtropical conditions. But it has actually not been kick-started from the temperate areas as such, so far as India is concerned. So according to you, what can be the initiatives that we can take at in temperate areas so as to expand it to the non-traditional areas and to improve its production? नॉन ट्रेडिशनल एरिया में तो हमारा महाराष्ट्र, एज पर महाराष्ट्र इज कंसर्न मैडम, तो हमारा तो ऑलरेडी टेम्परेट में ही है। और काफ़ी एरिया सुटेबल है, इसलिए तो यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत बढ़ रही है। कर्नाटक है, अदर स्टेट में भी अभी बढ़ चुका है। और लेकिन उसका जो डिटेल रिप्लाई निकम्बे साहब भी बता सकते हैं कि क्या इनिशिएटिव अदर स्टेट ये टेम्परेट और अदर रीजन के लिए कर रहे हैं। निकम्बे साहब आप बताओ। Yes. Yes, ma'am. Your question is really relevant. So, regarding the grape production, particularly in the temperate area, because you are talking about, I think, Jammu Kashmir area. So, definitely, I think not now, but from old time where it has been initiated, the plantation and all these things in Jammu Kashmir, particularly temperate area. So, the need is that about how we can grow the new varieties there, which will give the more commercial importance and farmer point of view. As yesterday you told me, madam, that Sahibi variety is there, which is giving a good performance and all these things. But we should not be dependent on the only the old varieties. As per the market, if you are going to tag, if we are going to catch the new variety, and it requires your scientific research inputs, because still there is not that much commercially grape is cultivated as per as my information concerned, because most of the farmers they are in my contacts. So whatever the universities are there, they need to take the first initiation on the research, particularly on commercial base, how we can grow the grapes in that particular pockets. And then the state government or the central government's Department of Agriculture, they can help through the different policies. And definitely, as mentioned by Dr. Mote Saab, PEDA, export agencies, and all these things are already, it is there. GrapeNet is also there. So it can be joined with that, and new initiation can be taken in these pockets. Thank you, sir. Thank you. Any other question, please? मोती साहब, आई थिंक आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि ऑल आर गेट गुड इंफॉर्मेशन एंड सेटिस्फाइड। सो आप अबे वो इशू नहीं है, अभी वो लंच टाइम है तो इसकी यस वजह यस से क्वेश्चन। नहीं सर, लेकिन ऑनलाइन है तो सभी लोग लंच करते हुए भी जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। सो सर, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। और थैंक यू। इवन दो मार्च एंडिंग महीना चल रहा है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। और यू आई डिड गुड प्रेजेंटेशन, सो रियली आई थैंकफुल टू यू सर फ्रॉम माय साइड। एंड यस सर, थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, वो बीएसएनएल का थोड़ा काम यस कर सर, दैट इज सम टेक्निकल इश्यूज एंड नेट प्रॉब्लम। ठीक है सर, लेकिन अच्छा रहा। और सर, हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर सर, थैंक यू। Answer. Yes, ma'am. Presentation. Adusha, Kindly madam. make a request. Yes, sure. I will make a Yes, request to ma'am. both. Sir, we need a. Yeah, madam. I got your point. Fine. I will take lead. Okay. So we will now meet. We will meet after 2:45. So we have the lunch break, and there will be one lecture regarding the grape initiation startup ABI. So we will meet at 2:45. So be with us online.
And then after last conclusion session will be there. So I will request we should have that discussion feedback while concluding session. Thank you.